He was formerly a research associate in the Indian Council of Medical Research, abbreviated as ICMR, Dibrugarh, and later on joined as an assistant professor in the Department of Forestry, Nagaland Central University. Dr. Fukan is the nodal officer of Swayam, a flagship program of the Ministry of Education, Government of India. Dr. Fukan has 9 Indian patents and 2 German patents. He has published papers in many national and international journals of repute. He is an ex-editorial board member and handling editor of the Journal of Applied Microbiology, formerly Wiley Blackwell, and the Letters in Applied Microbiology, formerly Wiley Blackwell. He is also a reviewer of the following journals: Journal of Applied Microbiology, Oxford University Press; Letters in Applied Microbiology, Oxford University Press; Waste and Biomass Valorization, Springer Nature; Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, Elsevier; Biomass Conservation and Biorefinery, Springer Nature; Discovered Applied Science, Springer Nature. With all my respect, I invite you, sir. Hello everyone. What happens after the lunch session? If you plot a curve of attendance versus time, the curve is always downtrending. Am I correct? But today I do believe and envisage that today it will be an exception. Okay? Anyways, Honorable Principal Madam, Government Digvijay College, the members of the organizing committee, the faculty members, invited speakers and dignitaries, the student folks, and each and everyone presented within the premises of this conference hall. Hello. This is my third visit to Chhattisgarh and maiden visit to Rajnandgaon. जब मैं छत्तीसगढ़ पहले बार आया था तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के जो मानव संसाधन विकास केंद्र के प्रभारी हैं अरविंद अग्रवाल जी, उन्होंने कहा था छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ। और छत्तीसगढ़िया मतलब क्या है? आप लोगों का जो हॉस्पिटैलिटी है, आतिथ्य है, शायद ही इंडिया में कहीं दूसरी जगह मिलेगा। राउंड ऑफ अप्लॉज टू द पीपल ऑफ छत्तीसगढ़। और माजिद अली सर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे नागालैंड से यहाँ आने का न्योता भेजा। And I sincerely acknowledge two wonderful gentlemen who escorted me away from Raipur Airport to Rajnandgaon. Thank you, Professor Vikas, and thank you, Nanda Gauri sir. So with these few words, I shall be starting my deliberation. See, my topic is on bioenergy. I am a bioenergy personnel, and I prefer to call myself as a recovering bioenergy personnel. See, the idea of utilizing biofuel is not new. In fact, centuries and millennia ago, mankind were using biofuel unknowingly. If you browse through the pages of world history, you will find that the Egyptians, the Greeks, the Mesopotamians, and even the civilizations in Harappa and Mohenjo-daro, they were using vegetable oils. Now, what is that vegetable oil? That is a plant-based oil, and that oil was used for lighting purposes. But this concept of biofuel, it got popularized only in the later part of the 19th century. And two of the prominent figures who played a cardinal role in popularizing biofuel. Number one is Rudolf Diesel, German engineer. He designed the diesel engine. I think everyone has heard about Rudolf Diesel. The first engine that he developed, it was propelled by something that was made from peanut oil. The peanut oil was converted into biodiesel. And then the second in the list, of course, every one of you know, is Henry Ford. Is the popularizer of the Ford company. This person, what he did, in the Paris exhibition in 1900, he displayed his Ford engine.
and it too was propelled by biodiesel made from peanut. And Henry Ford commented that today these types of fuel may seem to be irrelevant, but in the near future, those will be the top-notch demanding fuels. So he postulated, and there is a reality now, that whatever feedstocks can be fermented can be the source of biological raw materials for the coming generations. See, if you invite me to Chhattisgarh after 20 years, then I will say that people will be working on biological refineries. Today, people are working on chemical refineries. The chemical refineries will be replaced by biorefineries. So these things were already postulated by those intellectual genius decades ago. Now, why is this energy so important? Can you go to the first slide? See, let me talk something regarding wars. Huh? Let me go to the pages of world history. Following that only, I will enter my deliberation. Tell you a small story. The date was 6th of October 1973, and the place was Israel. The Jewish people were busy celebrating their holy day. That is the festival of Yom Kippur. So Yom Kippur means the day, the Jewish Day of Atonement. That means their way of connecting to the God, to the Jewish God, by removing the obstacles. That means atonement. So the coalition of the Arab nations, they decided to attack Israel on that particular day. So the Arab coalition, which was led by Syria and Egypt, they started a war against Israel on 6th of October 1973. So this war is known as the Yom Kippur War in history. So what were the consequences of the war? Of course, this is not a history class. The consequences of the war, one of the consequences was that following the Yom Kippur War, the Arab League declared an embargo. Embargo means ban. They banned the export of oil to all those countries who supported Israel. Okay? So this resulted in quadrupling. That means the price of energy became 4 times. So this was the first event when the world community decided that now we need energy security. If energy security is not there, then we don't need anything. You need energy security. So a rough idea about energy security. Can anybody tell me? See, energy security. How many of you are smokers here? How do you light your cigarette? You light your cigarette with a lighter, no? What will you do if you don't have a lighter? You'll use a matchbox, no? That is energy security. Simple. That means you have two things, A and B. If A is not there, you'll use B as a substitute, which is readily available. So after the 1970s, the nations all over the world have decided that we should be sufficient, self-reliant in energy. Okay? And this led to the offshooting of many programs. And one of those programs was the historic aquatic species program from the United States of America. And people often argue that this was one of the projects. In fact, the second costliest project of the bygone era. The first one was launched by NASA. That was for the search for extraterrestrial intelligence. So after that, President Jimmy Carter, he started the aquatic species program. It continued for 2 decades, but due to some budget cuttings, the project was finally stopped. Now here I would like to tell about our own India. Do you know what is the oil import worth valuation of the government of India? It's several $billion. In 2022, the Indian oil import, the valuation was 3 times the defense budget of Pakistan, which is our armed rival and sworn enemy. So this is one area where we need, this is not something to be proud of. Okay? This is one area where we really need to change our reputation. And how you are going to do that? You are going to do that. One of the ways is that we will become self-sustaining. We will try to produce our own biofuels.
See, the importance of this energy lies in another historical incident and belief. You all know about Adolf Hitler. So what Adolf Hitler did, he started an operation called Operation Barbarossa against the Union of the Soviet Socialist Republics. So the number is 3.8 billion. He directed 38 lakh soldiers to the Soviet Union. It was an amalgamation of the Axis powers. And his idea was to capture Stalingrad, the city that bears the name of the Soviet dictator Stalin. So he invited his propaganda minister, Hassan Goebbels, and he told that he was planning to attack Russia. That means the former USSR. And then he told Goebbels that Germany should increase their production of bioethanol. At that time, Germany was making bioethanol from potatoes. Now, again, I am repeating this, not a history class. What was the consequence? You know that the German army, the dream of the German army was crushed at the banks of the Volga. The whole German, the Nazi jackpot, everything was crushed. Now, can anyone tell me what was the exact reason for defeat of Germany in Russia? See, in your history textbooks, you will find many reasons. But now historians have come to a consensus. And one of the reasons they cited is that Germany lacked energy. Okay, they had good many number of armored vehicles. They had tanks. They had ultra-modern military warfare. But they didn't have energy to propel those. They didn't have petrol and diesel. In the Google, if you browse, you will find huge columns of tanks and German armored vehicles laying dormant and stagnant in Russian ice. Okay, so this suggests that how important is energy. Of late, you go to the Gulf War of 1992. The Bush administration declares war on Iraq. What was the pretext? क्यों अटैक किया था? You just Google it, you find two reasons they have given. And these are, the reason number one is that Iraq was developing chemical weapons. And number two is that the Iraqi government had close association with the Palestinian Liberation Organization. All these are bullshit. All these are bullshit. The main idea was to occupy the oil fields of Iraq. So this reminds us that how important is energy. So, have anybody read about the map rush for Atlantic? Nowadays, people are trying to move towards the Atlantic because they believe that the water level, the ocean, it harbors huge amount of natural resources. And even if nations like Russia have already proclaimed their share, so those will be burgeoning research topic in the near future. Then coming to the new one, the Russia-Ukraine war. Just yesterday I was checking. Of course, there are different reports, but according to one report, Russian missile barrage has destroyed infrastructure worth $3 trillion in Ukraine. And half of that is energy infrastructure, power plants, energy stations. Okay, so President Putin, of course, I admire this guy because a single man standing against the entire military machine of the West. But at the same time, I also criticize him for the war. But the fact is that he's targeting the energy infrastructure of Ukraine. So energy is something that is very, very important. Next. So this is just an energy map of India. You need not go in details. In our India, we find that majority of the population are BPLs, below poverty line. And then majority of the people are from the rural background. So you find that 70% of these people, they are directly dependent on biomass. And 32% of the primary energy consumption in India is from biomass derived sources. Now the question is that how much biomass
India produces. It's roughly 500 million tons. So you need not look at the other forms of energy. We are only focusing on bioenergy. Next slide, please. So, see, prior to moving to the next slide, I'd like to tell one thing. India is the only country in the world which has a federal ministry in energy. No other country in the world has an energy ministry. It's only India. And the name of the ministry is the Ministry of New and Renewable Energy. So with the FNRE, they have formulated certain policies. The biofuel policy of India is already there. You can browse. And one of the key points that the ministry has highlighted is to select particular feedstocks or raw materials that can be used for conversion to international road transportation fuels. So there are different feedstocks. For a person like me, I did my PhD on microalgae. I produced biodiesel, bioethanol, bio-oil during my PhD from microalgae. Now I have changed my topic. Now I have changed my raw material. Now I am working on invasive species. So the definition of invasive species I am not going to tell, it's already there. But one thing you remember, that invasive species, they have a very fast growth rate and they are highly resilient. Okay? They don't belong to the native ecosystem. They come from some other parts, and then there is blooming explosion. And they are notorious yield reducers. They compete with the native vegetation for food, nutrients, space, air, sunlight, and all those stuff. So there are different types of invasive species where we are working. In fact, my group is working. So in today's deliberation, I will be talking only about Lantana camara. Of course, we have a few other species like Azeratina edinophora, Eupatorium, and Stachytophyta jamaicensis. So all those papers have been communicated. But today, I would like to only deliberate on Lantana camara. And see, invasive alien species, I have written about the Sustainable Development Goal. So the Sustainable Development Goal 15, it also speaks about preservation of land, sustainability, and many other alike things. So invasive species, if you do research on invasive species, it augurs well to the SDC 15. Next slide. See, now comes to the magnitude of the problem. Why this research problem has been selected? See, you will find that these figures, see, these are theoretical figures. People do some empirical calculations, they communicate a paper, it gets accepted, those values are published in papers. This is not an actual figure. Okay, already the paper has been published. Now see, for an example, invasive species. Invasive species may be plants, they may be animals, they may be insects. If I talk about an animal, then the wild pig, jungly sword jo hota hai, there is an invasive species in the United States. In parts of the United States like Texas, Florida, the population of invasive, feral swine, they call it feral swine, that wild pig has increased like anything. And the government of the United States have now officially declared that hunting is legal in those parts. Hunting pertaining to those wild boars. Okay. Now see, these wild boars, they were introduced by the European explorers in the 15th century. Now who would have imagined that they would have increased their population by so many folds in a span of 5 centuries? So now their population has increased like anything. So that is about the animal context. When we come to plants, then we are discussing about Lantana camara. There is one among the top 10 notorious, I reiterate, notorious invasive plant species all over the world. It has become invasive in more than 60 countries in the world. Okay. See, from the presentation, it is clear that 1 in 10 species in the IUCN red list are threatened, and then crop production
biodiversity loss, the amount of money that you spend on capital investments and removing those invasive species, it amounts to several $billions. Now, one important thing I'd like to clarify here, some people are confused with the term weeds and invasive species. See, not all weeds are invasive and not all invasive species are weeds. If it is an invasive species, it may be plant, animal, or insects. But if it is a weed, it must be a plant. Weed is something that is undesirable in the place of cultivation. आप अगर धान का खेती कर रहे हैं, उसमें अगर गेहूं लग गया तो गेहूं भी है. Okay, this is the simplest example that I can give. So invasive species are not like that. They do not belong to the native ecosystem. They have come from some other place. And here there is a population explosion. They have exploded, and their population is competing with other native plants. And consequently, they are a big threat to the biodiversity and to the ecosystem in itself. Next slide, please, madam. So why invasive species has been considered for research? See, it has a ubiquitous growth rate. Because it grows anywhere. They are so resilient, they can grow anywhere. Yesterday, while I was coming from Raipur, I could see Stachytrophyta samicaensis in the Raipur area. Okay, so they can grow anywhere. They are resilient. Then they have a very fast growth rate, and much of the food crops. Suppose if you go to Brazil, the Brazilian people are making bioenergy from sugarcane. They make bioethanol. So this leads to a confusion whether you will raise sugarcane as a food crop or as a cash crop. So if you are working on invasive species, it is not contributing to the conundrum of the food versus fuel debate. Conundrum means puzzle. Okay, you need not be puzzled. You are not going to contribute. You are not going to research on a food crop. No? You cannot use a food crop as a biofuel source. This is what I mean to say. You have to investigate. Your research investigations should be on something that is not a food crop. If your aim is to produce biofuel, तो खाने लायक चीज है उससे क्यों बायोफ्यूल बनाएंगे? मेरा हिंदी मतलब थोड़ा कमजोर है. हाँ, मैं क्लास 7 तक 7वीं कक्षा तक ही हिंदी पढ़ा. 8वीं से मेरा असमिस था, तो हिंदी थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ. प्लीज डोंट माइंड, मेरा हिंदी बहुत वीक है. Anyways, nevertheless, they have an appreciable energy content. In coming slides, you can see that they have good energy content. Their energy content is quite competitive with some of the terrestrial energy crops known to mankind. And then, see, the most important thing is that these invasive species are considered as pests. Okay, what people are doing, they manually pick the invasive species. Okay, or they use an excavator to remove it. These, according to me, see, whatever God has made has some purpose. Okay, our duty as a researcher is to repurpose it. Now invasive species are considered as a waste. So we will not take it in a negative way. We will define it in a way that these are those species which have not been put to their best advantage. उसका क्या बेनिफिट है हम लोग को पता ही नहीं है. अगर पता चलता तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते थे. So we endeavor to transform and to convert those invasive species into something valuable. And that something valuable which we got in our lab was biofuel. In addition to that, antimicrobials and antioxidants also. Next slide. These are some of the diagrams of the invasive species which are easily available in the Indian context. Next. So this is something we call biomass conversion. So biomass can be converted through biochemical means as well as through thermochemical means. See, if your biomass, see, you don't need to go to that in details. Simple concept is that if any biomass has lipid, that means oil,
then it is good for obtaining biodiesel. Okay. If any biomass has high amount of carbohydrate, then it is good to make. It is a good raw material for fermentation. So you can get things like bioethanol. And if it is a waste, like invasive species, then the feasible option is that you convert it through thermochemical approach. That means you apply heat to convert it into something valuable. Okay. And then people are working also on biogas and all those things. There are different conversion technologies. But in today's deliberation, we will discuss only about pyrolysis. Next slide, please. So this is one of the custom-built pyrolyzers. This I have designed along with my PhD scholars, and we got an Indian patent for it. So this pyrolyzer, what we did, we collected the invasive species. We had heated the invasive species. We had finally ground the invasive species, the whole plant to powder, and then it was subjected to pyrolysis. Now, how was this pyrolysis done? It was done in nitrogen environment. And it was done from ambient temperature. Ambient means room temperature to 700 degrees centigrade. And a heating rate was employed. The heating rate we employed was 30 degrees centigrade per minute. So once you do pyrolysis, you get three different products. One is a solid product, which we call biochar. It is very popular nowadays. It is used as a soil amendment. And you get a liquid product. It is bio oil. But bio oil in itself cannot be directly used in vehicles. So bio oil has to be upgraded. And then the third one is a gaseous product. It is a mixture of carbon monoxide and hydrogen. So there are some specialized processes like Fischer drop synthesis to get the FT liquids that can be used as transportation fuels. Next slide, please. So this slide is depicting something about the biomass properties of the invasive species. So you can see that the biomass calorific value is around 16.5, and once we converted into bio oil, we had something around 30. Now for conventional biodiesel, the calorific value might be swinging around 42 and 44. Different oil refineries, the energy content will be different. No two oil refineries will have the same calorific value for diesel. Remember it. So the mass yield and energy yield, there are some specific empirical equations. You can fit your values there and you will get it. So density was displayed there, and viscosity. See, the density and viscosity of bio oil is a bit high. So there is also another research topic, what you can do to reduce the density as well as the viscosity of a fuel that you have obtained from thermochemical conversion of invasive species. And then, of course, they contain high percentage of oxygen, which impairs the calorific value. The calorific value is reduced. So it's good if the oxygen content is a bit less. And then see, one important thing is about the carbohydrate content. It's around 25%. If it's around 25%, it is good for fermentation. Next slide. So, see, your college already has a scientist, Dr. Verma is there. If you find any difficulty regarding chemistry-related aspects, you can directly contact Dr. Verma. He's a good friend of mine. So, FTR we have done. We were primarily interested in getting a peak around 3,200. So that corresponds to the presence of lipid. If you get significant proportion of lipid, we will make biodiesel for it. Okay. The other signatures that we obtain is that around 1200 to 900, those bonds, CEO, CC, COC, COP, this corresponds to polysaccharides. And then some protein moieties are also there. So that will be the presence of amide and C double bond O will correspond to those stuffs. Next slide. So this is the thermal degradation profile of the biomass. We have also included a DTG curve there. So simply I would say that if you subject any biomass to TGA, it can be divided into three stages. Stage number one is that once you heat it,
what will be the first thing that is released? That is That is moisture. moisture. The moisture The may be moisture may be intrinsic intrinsic as well as extrinsic. following Following moisture removal, what is left? the The compounds compounds such as cellulose and hemicellulose will be broken down. But But remember that remember that here here I I am am talking talking about about invasive invasive species. species. So So invasive species invasive is a species is a lignocellulosic lignocellulosic biomass. biomass. It has It has lignin, lignin, cellulose, cellulose, and and hemicellulose. hemicellulose. But if But you if talk you about talk something about like something like freshwater freshwater microalgae, microalgae, then they then don't they have don't have lignin. lignin. So So there the there major the major degradation will degradation will correspond to correspond something to like something protein or like protein or carbohydrates. carbohydrates. Okay? Okay? And And you you will will find find the the reaction reaction after after the the degradation degradation is is over. over. It continues Till till 700 degrees 700 degrees centigrade I have centigrade I shown. have But shown. if But it's if it's shown till shown till 1000 degree, it will 1000 degree, it continue. will continue. Because lignin Because lignin degradation is an degradation is an incomplete incomplete process. process. So So that that involves a involves a reaction reaction involving the charge. involving the charge. Next slide, please. Next slide, please. So this So is this is the TIC, TIC, total ion total ion chromatogram, chromatogram, CMS CMS profile profile of the of the bio bio oil oil from from Lantana Lantana Camara. Camara. So in So in GCMS, you GCMS, compare your compounds, you get good many stuffs. So our duty was to find find those those particular particular compounds compounds which which we we checked checked in in literature, literature, and and we we found found that that some of these some of these compounds which are compounds which are highlighted highlighted there, there, these these things, things, they have they have antimicrobial antimicrobial activities. activities. Okay, Okay, and some of and them some of also them has also has antioxidant antioxidant activities. activities. Next. Next. Now this Now is this is the the NMR. NMR. We have We have integrated the integrated the NMR NMR data. data. What is What is important for important us for us is is the the aliphatic aliphatic and the and the phenolic phenolic groups. groups. See the See the phenol phenol presence of phenol, it corresponds to antioxidants. And if And phenol if is there, phenol the is there, the calorific value calorific will be value will high. be high. And if the And if the aliphatic chain aliphatic is chain is there, there, then the then the calorific calorific value value will will be be more more as as compared compared to to their their aromatic aromatic counterparts. counterparts. So So basically, basically, we were on focused on aliphatic aliphatic groups and groups and phenols, phenols, and and we we got got good good results. results. Next slide. Next slide. So this is This is something something about about the the antioxidant antioxidant studies. studies. So most So most important thing is important that thing is that two two important important assays. One is assays. One is total total polyphenol, and the polyphenol, other and the one is other total one is total flavonoid. flavonoid. These two These two assays assays should be should be done done because because both both of of them them are are responsible responsible for for conferring conferring antioxidant antioxidant activities. activities. Now, Now, what is that antioxidant? antioxidant? It will It prevent will prevent oxidation. oxidation. If you have If you have something like something like DNA, DNA, protein, or protein, something or like that, something not like that, lipid, not lipid. so those So things those might things get might get oxidized. oxidized. So So you you need need something something called called antioxidants. antioxidants. So So today, today, the medical medical persons they have persons, they come have to a come to a consensus that consensus that majority of the majority of the degenerative degenerative diseases in the diseases in the human human body body is is because of because of consumption of consumption of less amount less of amount of antioxidants. antioxidants. Your body Your doesn't body have doesn't have sufficient sufficient antioxidants to antioxidants to neutralize those neutralize free those free radicals. radicals. तो इसीलिए तो डॉक्टर इसलिए साहब डॉक्टर कहते साहब हैं कहते हैं ना कि हरी कि सब्जी हरी खाइए. सब्जी खाइए. तो हरा सब्जी तो खाने हरा से क्या सब्जी होता है? खाने से उसमें क्या होता है? बहुत उसमें ज़्यादा बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट लोड होता एंटीऑक्सीडेंट लोड है, होता है, बहुत ही ज़्यादा. बहुत ही ज्यादा. तो तो see, the you see, human the body, human the body, grand when the grand architect designed architect man, designed man, he he uh, he he developed had some developed enzyme some systems in enzyme the human systems in the body. human body. Suppose Suppose glutathione glutathione oxidase, oxidase, glutathione glutathione peroxidase, peroxidase, superoxide, superoxide, bismutase, bismutase, catalase. catalase. These are enzyme These are systems in the enzyme human systems in the body. human body. They are They there to are play there their to play role, their role, but but sometimes that is not sometimes that is not sufficient. sufficient. So So you you should should consume consume more more and more amount of amount of antioxidants. antioxidants. Now you get Now free you get radicals. free See, radicals. See, in in Raipur, if you Raipur, go, if it's you go, it's polluted. polluted. If you inhale If the you inhale the polluted air, you polluted will get air, free you get radicals. free radicals. If you If drink you tap drink water, tap you will get water, free you get free radicals. radicals. And those And free those free radicals, when they radicals, when cross they the cross the threshold limit, threshold limit, one one day day they they will will cause cause some some degenerative degenerative disorder disorder in in your your body, body, like cancer. like cancer. Hmm? Hmm? So the So the idea is idea that is that people should people should consume consume more amount more of amount of antioxidants. antioxidants. So So our our sample, sample, it had, suppose suppose we we have had done done some some biological biological tests tests and we got and we good got good values. values. So So it is it is feasible that feasible that we we can can extract extract pharmaceutical pharmaceutical grade grade antioxidants from antioxidants the from the bio bio oil. oil. So So this bio this oil, bio oil, they will, if we if we use the use the antioxidants, it will antioxidants, fight with the fight free with the free radicals. radicals. Okay. Okay. Next slide, Next please. slide, please. See, this is See, this about is the about the antimicrobial antimicrobial assay. assay. We
we have not shown the LB50, Middle Nose 50 and the MIC data.
then some anti-cancer experiments were also done. But I was told by the organizers that the time allocated to me was strictly 30 minutes. So those data I didn't include it. And then I prepared the slide just yesterday night. Okay, so I have summed up everything in 15 slides. So this is the antimicrobial assay. It's a very simple assay. You students in your microbiology lab can do this other wall diffusion technique. So you will find that it had shown some good values. In fact, the value against fungus was very good. Now, what is important is that sometimes you find certain antimicrobials which are effective against gram-positive bacteria, but they are not effective against gram-negative bacteria. The reason is the architecture of the bacterial cell wall. Okay, if you find the gram-positive bacteria, it has a peptidoglycan layer. In case of gram-negative bacteria, it has a lipopolysaccharide layer, and above it there is an outer envelope. So your antimicrobial may not penetrate. Okay, then regard to fungus, some of the samples might show activity against fungus, some may not show. So you need not be shocked, because fungal cell wall has chitin, bacterial cell wall has peptidoglycan. So they are different things. So the idea here is that our idea was that we would try to find all potential applications of the feedstock by converting it into bio oil. Now, certain experiments are going on in my laboratory. We are working on economic analysis. Of course, that is not my part. We have taken help from some economic persons to calculate the life cycle part of the biofuel and the techno-economic assessment. Some anti-cancer experiments have also been done with cell lines, but that too, I am not a cancer biologist. I gave the sample to my friend, and he told me that they are getting good results pertaining to apoptosis as well as gastrointestinal cancer. So these are a few things. With these few things, next slide. So I think that I have summed up within 30 minutes. If I take another 2 minutes, it will be 30. So anyways, bio oil. See, if you study the chemical structure of bio oil, it has diverse all chemical classes in mind. So bio oil, it is not only a bioenergy feedstock, it is also a chemical feedstock. If you want some fine chemicals, then separation technologies are there, purification technologies are there. You can extract those fine chemicals from bio oil. And then, of course, any research is not conclusive. We need greater research capacities for our research pertaining to bioenergy generation and value addition. We need to do additional research like life cycle assessment, techno-economic feasibility, and so on. So this is what I had to present, and I think that I am on time. Thank you, everyone. God bless. And one special line for Chhattisgarh. Jai Johar, Jai Chhattisgarh. The session is open for question and answers. If anybody has doubts, he or she can ask questions from our resource person. Anybody? Yes? This was very nice presentation, sir. Thank you for this presentation. You are talking about bio oil purification. So how we can use this bio oil for the purification? If you can give us some of example for that.
See, the most important thing is that how do you purify something? Chemistry, you go for a hell lot of chromatographic procedures. Okay, these would include everything. You can start from TLC, thin layer chromatography, huh? And it will go on and on. All those chromatographic procedures are used for purification. And the most important question regarding biofuel is that it has a very high viscosity. So, how to reduce the viscosity? So you can use some surfactants to reduce the viscosity of the bio oil. That way the bio oil will be modified. And in addition to that, bio oil has a very high oxygen content. Okay, so you have to do some deoxygenation procedures. And for that, I think Professor Akeshwar Verma can be a better person to enlighten you. Anybody else? Presenter is not very fond of listening to questions. You can ask me in any time if any queries are there. Because somebody already told me that they are running behind the schedule. It was already told to me by the presenters. But anyways, I can take one more question. Very Very good good afternoon. afternoon, So sir. my So my question, first question is that what exactly what that is what that you got after pyrolysis? Was it biofuel, bioethanol, or biodiesel? Yeah, that is a very good question. See, when you do pyrolysis, you get three products. One is a solid product. That solid product is biochar. Yes. So people generally use that biochar. See, it is generally used as a soil amendment. Okay, and then you get a gaseous product. That gaseous product is carbon monoxide plus hydrogen, 85%. So there is a special technique called Fischer-Tropsch process by which you can obtain some biofuels from the that syngas. Okay, but then we have not done. Our focus was on the bio oil. So what we have done, we got a very good 42% or something like that, if my memory serves me right. So that bio oil is already with us. So that bio oil, I told you that it has a very high density, viscosity, and an oxygen content. So now though I don't have money, if I get money, then I will do some good research where I can remove the oxygen content, where I can include biosurfactants to increase the viscosity of the biofuel. Plus, we can go for some engine testing. In engine testing, you will find the torque, you will find something like the brake thermal efficiency and all those things. And then when you get the fuel should have it has a border line, a table. That is called the ASTM, American Society for Testing and Materials. Your value should come within that range. If it is less than them or beyond that, that fuel nobody will buy. Okay, there is another standard that is the EN 14214, European Nations 14214. So if all those things come, then you have to do the economic analysis. अभी अगर तुम बनाने में $20 लगा दोगे तो उसको $10 में कैसे सेल करोगे? It should be economically viable. After that, then product will be in the market. So I have spent 10 years trying to make it economically viable. Now I have decided to change my field. Okay, now I work in medicinal plants. तो वो देखूंगा जब होता है. But that question was very good. That what we will do with the bio? Thank you, madam. So, in continuation, one more question. So, you have done antimicrobial and antifungal analysis. So, my question is that if you have used the crude bio oil that you got, or you have refined it. Crude. Thank you so much. Thank you so much. Oh, my pleasure. My pleasure. Thank you, everyone. God bless. Thank you so much, sir, for this informative lecture. Now we'll move towards our next resource person, Dr. Ashish Jha, sir, HOD, Islop College, Nagpur. Welcome, sir.
like to give a brief introduction about our resource person. Dr. Ashish Kumar Jha is the head of Department of Zoology, is Law College, Nagpur. He has 18 years of experience in education sector. He has 7+ years of experience in research. He was appointed as permanent lecturer in zoology at Bhavbhuti Mahavidyalaya, Amgaon from 1st February 2006 to 21st November 2014. He was appointed as assistant professor at Hislock College, Nagpur since 22nd November 2014 and till date. He has obtained his post-graduation degree and PhD degree from the RTM Nagpur University. He is a recognized PhD supervisor at RTM Nagpur University. He has organized several training and awareness programs on Meli pony culture and apiculture. He has published several research papers in reputed journals, and he has also published 6 books. He has guided 2 research scholars with their PhD degree, and he has completed 2 research projects. Welcome, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. First of all, I would like to thank Principal ma'am and the organizer for inviting me to the international conference. and And being in Hindi speaking belt, I would like to take the privilege of speaking in Hindi. तो पर्टिकुलरली हम लोग समझने की कोशिश करें, इतना बड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज में चाहिए। हम लोग समझने वाले हैं मधुमक्खी पालन और वो किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज में काम करता है। और मैं चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उसको थोड़ा सा समझे, क्योंकि ये आपके लिए ज्यादा चैलेंजिंग है। तो जब हम मधुमक्खी का बात करते हैं, बेसिकली मधुमक्खी पालन, तो आप एक चीज देखिएगा कि ये तो वर्षों से होते आ रहा है। ओल्ड एज प्रैक्टिस हम बोलते हैं, बी कीपिंग ओल्ड एज प्रैक्टिस है, ट्रेडिशनल है। लेकिन एक चीज और आप ध्यान दीजिए, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, यानी कि ह्यूमन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। और ये जो प्रॉब्लम आपने आज लिया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ये भी ह्यूमन सिविलाइजेशन का ही प्रॉब्लम है। तो जब हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो एग्रीकल्चर से कैसे रिलेटेड है, तो हमको बहुत पहले से मालूम था, ये परागीकरण करता है, दैट इज पॉलिनेशन करता है। और पॉलिनेशन के कारण हमारा जो क्रॉप का जो यील्ड होता है वो बढ़ जाता है, उसका जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ जाता है। ये हम लोग बहुत पहले से पढ़े हैं। इसी को अगर हम ब्रॉड लेवल पर देखेंगे, तो ब्रॉड लेवल पर आज जो प्रॉब्लम है, आप किसी भी ग्रोइंग सिटी का ले लीजिए, तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो होता है लीनियर डेवलपमेंट। लीनियर डेवलपमेंट उस चीज को बोलते हैं जब आपके घर के पास से रोड और रेल ट्रैक बनाता है, मेट्रो, रोड, रेलवे, ये सब लीनियर डेवलपमेंट है जो आज के डेट में हम देख रहे हैं। दूसरा जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है वो है अपना अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन एक और प्रॉब्लम है जिसके कारण हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है। तीसरा जो चीज होता है जो हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर रहा है वो है माइनिंग, कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। तो ये सब जब चीज होता है, इसके कारण हैबिटेट डिस्ट्रॉय होता है। इस समय में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है बी का। बी का रोल इसलिए रहता है क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं बी का काम है प्लांट का पॉलिनेट करना। प्लांट अगर तो उसने पॉलिनेट कर दिया तो वो प्लांट का जो रिप्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। प्लांट का रिप्रोडक्शन बढ़ गया तो प्लांट के नंबर बढ़ेंगे। अगर प्लांट के नंबर बढ़ गए तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बढ़ेगा। अगर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो गया तो आप उस लैंड को रीस्टोर कर देते हैं। तो ये रीस्टोरेशन ऑफ लैंड जो बोलते हैं, उसमें टिपिकली रोल प्ले करता है बी। ये चीज जो मैंने इतना बताया, ये सारे मैंने पेपर में जब मैं पीएचडी कर रहा था उसी समय में मैं प्लांट और एनिमल इंटरेक्शन पे काम करता था। मेरे पास में 2 चीज था। एक प्लांट में जो हमारे पास में जब फॉरेस्ट के पूरे प्लांट थे जिसमें 22 फैमिलीज है, वो पूरे ट्रीज थे जिसपे मैं काम कर रहा था। और एनिमल में जो मैंने पकड़ा था, एक हनी भी पकड़ा था और बाकी सॉइल पे पकड़े थे। और ऐसे हम लोग बेसिकली इंटरमोलॉजिकली पूरे एनिमल पे काम किए थे। जब हम इस पे काम कर रहे थे तो एक चीज हमने देखा, बी जो होता है वो हाइड्रोप्टेरा में आता है। ये जो फैमिली है हाइड्रोप्टेरा, बीच में पार्ट है। एक चीज हमने देखा कि हर तरह से 22 के 22 फैमिली को ये पॉलिनेट कर रहा है। हमने ये जो प्लांटेशन हुआ था मैग्नीज और इंडिया माइल का,
ये 1990 में प्लांटेशन हुआ था, बीड़ी के द्वारा प्लांटेशन किया गया था। और हमारे द्वारका सर हैं, कल जब कॉलेज सब बोले जो उनके गाइड थे, उनके नाम पे ऊपर प्लांटेशन है। जब हम उसको स्टडी कर रहे थे तो हमने एक चीज देखा कि जितने प्लांट किए गए हैं उससे बहुत ज्यादा प्लांट अब पाया जाता है। जब मैं 2005 में वहां पे स्टडी शुरू किया, जो रीजन था इंक्रीज करने का, उसमें से सबसे बड़ा रीजन जो हमको मालूम पड़ा वो था ग्रोथ ऑफ हाइड्रोप्टेरा। और हमने वो एक चीज और स्टडी किया साथ में, वो था कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हमने निकाला। और आप देख सकते हैं किस तरह से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बढ़ते जा रहा है और सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन भी साथ में बढ़ते जा रहा है। तो ये चीज तो हमको पहले से पूरा क्लियर हो गया था कि जो बी है वो रोल प्ले कर रहा है रिस्टोरेशन ऑफ माइंड्स में। और एक बार आप इस चीज को रिस्टोर करते हैं, ऑटोमेटिकली आप क्लाइमेट चेंज के प्रति काम करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट जो टारगेट था, इस चीज को हमने पहले पब्लिश किया, लोगों तक गए हम उसको, और हमको जो जो उसमें प्रॉब्लम दिख रहा था और वो जो हमने सजेशन दिया, उसमें से पहला सजेशन यही है कि जब भी आप रिफॉरेस्टेशन करते हैं तो साथ में वहाँ पे बी कीपिंग का एक पार्ट रखिए, जो आज के डेट में आप गवर्नमेंट पॉलिसी में नहीं देखेंगे, लेकिन हमने उसको बहुत जगह में ये किया गया है। टाइम कम करने के कारण हम लोग आगे जाते हैं नेक्स्ट समझते इसमें इनोवेटिव क्या करना है आपने को, क्यों हम लोग का सक्सेस नहीं है। आप यहाँ पे राजनीति में कई बिगिनिंग साइड भी देखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ मेजर प्रॉब्लम हो रहा है। क्या प्रॉब्लम है पहला हम समझेंगे। पहला जो प्रॉब्लम है, हमारे से कोई यहाँ पर मैग्नेटिक बिगिनिंग नहीं करता है। बीज जो होता है उसको फ्लोरा लगता है। अगर फ्लोरा में जो नेक्टर है और पॉलन है वो एक जगह में हर समय नहीं मिलेगा, आपको डर्थ पीरियड आता है। डर्थ पीरियड उस पीरियड को बोलते हैं जिस समय में वहां पर फ्लोरा का कमी है। आपको उस समय में बी को माइग्रेट करना ही है। अगर एक सक्सेसफुल बीकीपिंग हमको करना है तो बिना माइग्रेटरी बीकीपिंग का नहीं हो सकता है। सेकंड जो होता है वो है, ये देखिए, ये हम लोग फॉरेस्ट के बीच में, ये जो हम लोग का प्लांटेशन है, ये हम लोग के कोडाली में, उसमें कोडाली है, वहां पे हमने ये काम किया है। अब अभी तक वहां पे सक्सेस नहीं हो पा रहा था, फॉरेस्ट में वो लगा रहे थे। हमने क्या किया, साथ में एग्रीकल्चर क्रॉप डाल दिया, और आज ये सक्सेस है अपने आप में। हमको यहाँ से अच्छे खासे लाइवलीहुड में हर फार्मर जो यहाँ पर जुड़े थे, हर फार्मर का जो इनकम है 10,000 के ऊपर का इनकम बढ़ गया है। और मंथली तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, उनको एनुअली अगर आप देखेगा तो 30 से 35,000 रुपए एक्स्ट्रा। तो हमने एग्रीकल्चर साथ में इंट्रोड्यूस कर दिया फॉरेस्ट में। ये वेस्टलैंड था, सिर्फ हमको खर्चा हुआ लैंड को लेवलिंग करने का, और इसमें माइक्रोराइजर डालना पड़ता है, क्योंकि सॉइल जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं देंगे ना, आपको ये चीज का ग्रो नहीं होगा। इस दो के अलावा हमारा कोई खर्चा नहीं था, और आज के डेट में आप यहाँ पे खेती दे सकते हैं, अच्छा खासा हो चुका है। तीसरा जो हमको लगता है, हमारा जो हाइट डिजाइन है, इस पे हमको बहुत वर्कआउट करना है। मैं बहुत कम देखता हूँ कि कोई भी शेड में रखता है। शेड में एक बक्सा तो शेड में रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, मुझे हमेशा लगता है पेंट, आप जो पेंट करते हैं आज के डेट में एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी पेंट्स आते हैं, आपके साथ जितने भी सनलाइट आ रहे हैं सबके सब रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग तो पर्टिकुलर विदर्भ में रहते हैं, विदर्भ में तो हमारा जो क्लाइमेट है वो 50 टच करता है। अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो हमारे डब्बे तो सर्वाइव ही नहीं करेंगे। और आज 5 साल से मेरे कॉलेज से डब्बे हैं और सबके सब सर्वाइव कर रहे हैं। हम डिवीजन भी करते हैं और वहां से सेल आउट भी करते हैं। तो ये देखिए, ये इजी है, खाली एक पेंटिंग का है। अभी जो हम नया कर रहे हैं, नया हम कर रहे हैं, फूड को चेंज कर रहे हैं। हमने नया टेक्नोलॉजी क्या किया, अब हम पाइनवुड ले रहे हैं। पाइनवुड बहुत हल्का होता है, और सीजनल अगर आप देखेंगे तो सीजन का इफेक्ट नहीं होता है, अंदर से बहुत कूल रहता है। कितना भी टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका कूलिंग कम नहीं होता है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है सारे बच्चों के लिए जो रिसर्च करना चाहते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी। यू हैव टू डिजाइन द बॉक्स, जस्ट टू डिजाइन। अगर आप किसी भी तरह से टेम्परेचर 2 डिग्री कम करने का इसमें आ गए, आप उसको पेटेंट कर सकते हैं। आप उस प्रोजेक्ट को आगे ले जा सकते हैं। आपको गवर्नमेंट के फंड मिल सकते हैं, गवर्नमेंट नहीं करेगा तो आपको एफएओ का फंड मिलता है। नेक्स्ट जो मुझे लगता है वो है ऑर्गेनिक। अपने इधर में एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आप यहाँ पर देखिए बीज सब भरे पड़े हैं। ये जब हम खेत पे जब डब्बे डाले, हमने एक चीज देखा, जब पेस्टिसाइड स्प्रे होता है तो बी को जबरदस्त इफेक्ट होता है, और इस कारण से कॉलोनी अबेंडन करते हैं। जो फार्मर्स कंप्लेन करेंगे कि हमको पेटी मिला, लेकिन वो पेटी में बीज सर्वाइव नहीं किया। इसलिए नहीं क्योंकि आपने पेस्टिसाइड यूज किया। आप इनको भी बताइए कि वो ऑर्गेनिक कर रहे हैं, इस दुनिया को बता सकते हैं। आप एनिमल को चीट नहीं कर सकते, वो इफेक्ट है, ये आप देख सकते हैं। मुझे तो लगता है कि अगर ऑर्गेनिक खेती करना चाहिए, जो गवर्नमेंट का भी ये है, हम लोग सबको मालूम है कि ऑर्गेनिक खेती करना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि बी भी आपको वही बता रहा है कि आप ऑर्गेनिक मैनेजमेंट टेक्निक यूज करें।
अब इसके बाद हम देखें कि कुछ एडवांसमेंट एडवांसमेंट में कैसा है जो हमने किया है। और मैं बता रहा हूँ ये सारे के सारे चीज आप पेटेंट कर सकते हैं। हमने सिर्फ यहाँ पे एक सेंसर लगाया है। ये आपको दिख रहा है, ये सेंसर जो है ये ह्यूमिडिटी नापता है, टेम्परेचर नापता है। अब ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का इंपॉर्टेंस कैसा होता है बीप में। अगर ह्यूमिडिटी जो है, टेम्परेचर जो है वो 30 से 35 डिग्री है तो ब्रूट जो है वो डेवलप होगा 30 से पहले, और वो रैपिड डेवलपमेंट होगा। यानी कि अगर बॉक्स को हमको डिवाइड करना है, हमको डिवीजन करना है कॉलोनी का, हमको 1 का 2 करना है, तो मुझे जो टेम्परेचर चाहिए वो 30 से 35 चाहिए। मैं किसी भी टेम्परेचर में अगर डिवाइड कर दूंगा तो बी कभी बचेंगे नहीं बॉक्स। तो ये मुझे बता देता है कि कौन से बॉक्स को डिवाइड करना है, कौन सा नहीं। ह्यूमिडिटी का कैसा रहता है, अगर 70% के ऊपर चला गया तो आप समझ लीजिए आपके बॉक्स में डिजीज लगना ही है। या तो फंगल डिजीज लगेगा, या तो बैक्टीरियल डिजीज लगेगा, या फिर वेस्ट मॉथ का इफेक्ट होगा। लेकिन ये जब दो चीज हमको मिलता है तो हम आराम से इसको हम मैनेज करते हैं। तीसरा, ये मुझे वेट बताता है। ये जो सेंसर है ये मुझे बी का वेट बताता है बॉक्स का। अगर बॉक्स का वेट बढ़ रहा है यानी कि हमारा हनी तैयार हो रहा है हमारा। और इसमें कैमरा लगा हुआ है। कैमरा जो रहता है वो 15 सेकंड के लिए, 1 मिनट में 15 सेकंड के लिए ऑन होता है। 24 आवर्स में हम चेक कर लेते हैं बी का जो मूवमेंट है कितना अंदर और कितना बाहर कर रहा है। ये एक सिंपल सा डिजाइन मेरा है, आप इससे अच्छा डिजाइन कर सकते हैं इसको और इम्प्रूव कर। आप सेंसर लगा के और इसका पेटेंट भी ले सकते हैं और एक अच्छा रिसर्च है। मैं बता रहा हूँ आपको फंडिंग मिलेगा इसका अगर आपने बी को किसी तरह से बचा लिया तो। नेक्स्ट जो मुझे एक और चीज जो कमी दिखता है अपने इधर में वो है जेनेटिक। हमें सबको मालूम है, अगर आप किसी भी खेती करने वाले से पूछिएगा तो फार्मर तुरंत बता देगा कि ये बक्सा से ज्यादा मधु निकलता है, ये बक्सा से कम मधु और इससे नहीं निकलता। लेकिन जब डिवीजन का बात आता है तो वो उसको भी डिवाइड कर देता है जिससे मधु नहीं निकल रहा है या जिससे कम निकल रहा है। हमारा क्या कहना रहता है कि आप क्या करिए, जो फीड आपको हेल्थ वाइज या फिर प्रोडक्ट वाइज यानी कि ज्यादा हेल्दी दिख रही है, या फिर जिसको कुछ कॉलोनी अपने को हेल्दी दिखती है, नंबर से संख्या से पता चलता है एक ही डब्बा में 5000 के आसपास मधुमक्खी दिखेगी। हमको पता है ये हेल्दी है, हमको पता रहता है कि उसका मधु ज्यादा बन रहा है। जब हमको ये पता रहता है तो हम क्या बोलते हैं कि आप क्लोन उसका इस्तेमाल करिए, क्वीन आप किसी भी डब्बा का लीजिए। लेकिन जब आप क्लोन लीजिएगा तो क्लोन उसी डब्बा से लीजिए। और इसका दूसरा टेक्निक होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। वो थोड़ा टेक्निकल है, अपने घर के फार्मर नहीं कर सकते हैं। उसमें हम क्वीन को लेते हैं और एक जो क्लोन हमको अच्छा लगता है उसको लेते हैं, उसके ये हमारे फार्मर के बस की बात नहीं है। तो वो टेक्निक तो हम लोग एज ए स्टूडेंट आप लोग कर सकते हैं, आप लोग स्टडी कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट कि उसका जो प्रोडक्ट आ रहा है कितना बढ़िया आ रहा है। बट यू कैन कमर्शियलाइज इट, तो आप इसको लेके नहीं जा सकते आगे। एक जो होता है वो होता है सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अगर आपको बी कीपिंग करना है तो एक चीज आपको मान के चलना है, आपको फ्लावरिंग। अब यहाँ पे इतने सारे डब्बे रखे हुए हैं, हमारे छोटे से स्लैब में कम से कम 100 डब्बा होगा, लेकिन वहां पर 30 तरह के अलग अलग बी फ्लोरा हो गया। हम सबसे पहले फ्लोरल कैलेंडर तैयार करते हैं। फ्लोरल कैलेंडर से हम देख लेते हैं कि कौन सा मंथ उसके लिए खराब जा सकता है, या फिर एक्सोटिक प्लांट पे जाना हो तो हम उसके लिए लाएंगे। तो ये हम करते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है फॉरेजिंग मैनेजमेंट अगर आपको बी कीपिंग करवाना है। जब हम बी कीपिंग का बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी मधुमक्खी ही नहीं रहती, इसके अलावा बहुत सारे बी रहते हैं। ये सब सॉलिटरी भी है, ये ब्लू बैंडेड भी बोलते हैं, ये कारपेंटर भी है, ये लीफ कटर भी है, ये सारे के सारे बीज है। आप अगर एक बी को प्रोटेक्ट करते हैं तो साथ में इसको भी प्रोटेक्ट करेंगे। इससे फायदा क्या होता है, आपको पता नहीं है आपके खेत में कौन कौन से प्लांट है। कुछ फ्लावर बहुत छोटे होते हैं, पौधे वाले सर उनको अच्छे से मालूम है, और कुछ बहुत बड़े फ्लावर होते हैं। बी का जो टक होता है फ्लावर के साथ में इवोल्यूशन हुआ है। तो आप सिर्फ और सिर्फ सेमिना इंडिका और पेलिफेरा रख के खेत में खेती नहीं कर सकते हैं। आप इनको जगह दीजिए, ये आपका खेती करके आपको अच्छे से दे देंगे, क्योंकि ये एडप्टेड है। और ये आपके पूरे एंडेमिक प्लांट को बचा के जो आपके अपने प्लांट है उनको वो बचाएंगे। ये उसी से एडप्ट किए हुए हैं। बस आगे आपको इनके लिए रहने के लिए घर देना है। घर भी कोई बहुत बड़ा नहीं रहता है। ये देखिए, ये हम लोग ये हमारा सॉलिटरी बी के लिए घर बना के आप देते हैं। तो इसमें क्या रहता है, हमारे जो बीज रहते हैं वो इसमें ये तो आप लोग देखेंगे। और ये आप देख रहे हैं, ये मेरी पोनी का डब्बा है। इसी डब्बा ये जब हम कैप्चर करके रेस्क्यू करके लाते हैं
तो हम इसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इस डब्बे में हमारे पास दो दो डब्बे बन जाते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। आप इसके बगैर आप जब तक उसका पॉपुलेशन नहीं बढ़ाएंगे आपको कंट्रोल नहीं कर सकते आप उसको। ये एक फ्लोरल मैनेजमेंट है जो हम लोग मामलों का पर्टिकुलर डिजाइन है हमारे इस एरिया के हिसाब से। तो इस तरह से हम उसको आधा एकड़ में किए हुए हैं। अब इसका फायदा हमको कहाँ पे मिलता है? तो इसका फायदा हमको लाइवलीहुड में मिलता है। तो लाइवलीहुड में आप देखेंगे तो हमारे साथ में जो फार्मर अटैच है, पर्टिकुलरली हम लोग जो काम कर रहे हैं आज बीच करके फॉरेस्ट है, जो आपके एमपी में भी आता है और कुछ पार्ट नागपुर से भी, महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र में जो पार्ट है उसमें पुलिस मारा है, तो पुलिस मारा गेट पे हम लोग ये काम करते हैं लाइवलीहुड का। यहाँ पे हम हनी बना रहे हैं, वैक्स बना रहे हैं, और ये जो देख रहे हैं ये रॉयल जेली बन रहा है। ये मार्केट में 50,000 रुपीज केजी है, और ये बी पॉलन है, और ये प्रोपोलिस है, और प्रोपोलिस भी मार्केट में 5,000 रुपीज केजी है। सबके सबके अपने मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, फूड डीलिंग प्रॉपर्टीज है। मैं पर्टिकुलरली उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि आज का जो साइड है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो ये इस तरह से वो इकोनॉमिकली भी आपको सस्टेन करता है। दूसरा जो आप देखेंगे कॉस्ट है, ये पर्टिकुलरली हमको हम लोग ये प्राइस रखे हुए हैं, और इस प्राइस में हमारे पास से आराम से सो इट इज प्लेइंग ए वेरी गुड रोल इन लाइवलीहुड फॉर द रूरल एंड ट्राइबल पीपल। ये गरीब लोगों के लिए वो अच्छे खासा वो इनकम करके जनरेट करके दे रहा है। जो आपको करना पड़ता, आपको ट्रेनिंग लेना पड़ता है उनका, क्योंकि जब तक आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे वो होगा नहीं। ट्रेनिंग में हम उनको यही बताते हैं, और हमारा जो मेन कोशिश रहता है हम यहाँ पॉवर्टी एलिमिनेशन कर सके और उसको इकोनॉमिकली डिसाइड। अब इसमें जो प्रॉब्लम्स है अब हम लोग उसको देखेंगे थोड़ी देर में। प्रॉब्लम पहला जो आता है वो है फंडिंग। फंडिंग कहाँ से आएगा? तो फंडिंग जो करता है हमारे इधर पे प्राइम मिनिस्टर का नेशनल हनी मिशन है, आदि बोर्ड का हनी मिशन है, इसके अलावा नेशनल बी बोर्ड है और सीबीआरटी है, और फॉरेन का फंडिंग देखेंगे तो एफओ है। तो ये सारे फंडिंग एजेंसी है जो बी कीपिंग को करते हैं फंड्स। जो दूसरा हमको लगता है कि पॉलिसी को कुछ स्ट्रेंथ करने की जरूरत है। पॉलिसी को इसलिए स्ट्रेंथ करने की जरूरत है, जैसे हम फंडिंग का ही बात कर रहे हैं, तो वो फंडिंग आपको बीकीपिंग करने के लिए दे रहे हैं, ना कि उसके ऊपर रिसर्च के लिए। तो एज ए फ्यूचर मुझे हमेशा लगता है कि हमको फंड रिसर्च के लिए मिलना चाहिए ताकि उसका बेटर इम्प्लीमेंट हो सके। तो हम लोग बहुत बार कोशिश की ऐसी कोई बताया, जैसे कि पॉलिसी में नहीं बैठता है साहब, पॉलिसी में नहीं बैठता तो हम फंडिंग के लिए एलिजिबल नहीं रह पाते हैं। दूसरा जो मुझे लगता है अभी तक कोई ऐसा एग्रीकल्चर में ऐसा कोई पॉलिसी ही नहीं है जहाँ पे आप पेस्टिसाइड का स्प्रे को रोक सके, और उस कारण से भी बहुत ज्यादा खत्म हो रही है। तो ये भी एक पॉलिसी का ड्रॉबैक मुझे दिखता है। इसके अलावा जब हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ये बेसिकली हम लोग को इन्वायरमेंट वालों से रहता है कि जो इन्वायरमेंट का पॉलिसी बना रहे हैं, जब भी रिस्टोरेशन और डिफॉरेस्टेशन का बात आता है तो वो कम से कम बीकीपिंग वहां पे रखे। आज के डेट में आप देखिएगा इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है। अब बीएसएफ वाले हुए, सीआईएसएफ वाले हुए, ये सबको एक बात बताया गया बॉर्डर पे बीकीपिंग करने के लिए और एयरपोर्ट पे बीकीपिंग करने के लिए। तो थोड़ा सा इफेक्ट तो हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कम है। अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल से देखें तो जिसे बीकीपिंग जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल के जीरो स्प्रेड भी आता है, क्योंकि वो पॉवर्टी जीरो का बात करता है। हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि बीकीपिंग से एग्रीकल्चर में इनफैक्ट 75% जो फूड क्रॉप है वो आपका बीकीपिंग से होता है, और 90% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो है वो बी के कारण प्रोपेगेट कर रहा है। तो नेचुरली उससे आपको फूड मिल रहा है, तो वो इसमें आ जाता है। इनहेंसिंग फूड सिक्योरिटी है, फूड पॉलिनेशन जीरो अंदर में आता है। सस्टेनेबल गोल का दूसरा जो है क्लाइमेट एक्शन एंड रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ये भी बीकीपिंग के साथ में, क्योंकि पॉलिनेशन हो रहा है। पॉलिनेशन होने के कारण जो प्लांट है वो इंक्रीज हो रहा है। प्लांट इंक्रीज होता है तो कार्बन सिक्वेस्ट होता है। कार्बन सिक्वेस्ट यानी कि कार्बन जो एटमॉस्फेयर से है वो सॉइल में आता है। तो इनडायरेक्टली जो है बीकीपिंग उसका रोल प्ले करता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो प्रोमोटिंग बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एंड लैंड रिस्टोरेशन, और ये हमने आपको पहले सबसे पहला जो स्लाइड था हम लोग का जो वर्क था वो था 35 माइंड में हमने रिस्टोर किया। बाकी ये सब फाइनल थॉट्स मुझे लगता है कि इससे बेटर मैं क्वेश्चन लूं वो ज्यादा मुझे बेटर लगेगा बजाय बताने का। तो अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो जरूर।
कैलिफोर्निया में जो है बादाम के उत्पादन में इतने सारे बीज। सर सर कैलिफोर्निया में जो कैलिफोर्निया बादाम में के जो बादाम के उत्पादन खूब में सारे बीज खूब का जो सारे बीज का जो डेथ हुआ है डेथ और हुआ है लगातार और उनकी लगातार स्पीसीज उनकी घटी जा स्पीसीज रही है, घटी जा रही है, इसके पीछे क्या कारण हो क्या सकता है? कारण बादाम है? उत्पादन से बादाम नहीं उत्पादन होगा। से नहीं होगा। हम लोग खुद भी जो हमारे कॉलेज से कम से कम 100 जो स्टेनलेस स्टेनलेस बी के बॉक्स होते हैं वो जाते हैं रेंटल फ्लावरिंग में। फ्लावरिंग में। अभी हमारा जो बेल्ट देखोगे ना, नागपुर का जो इधर का जो नागपुर के अमरावती वाला जो बेल्ट है, वहाँ पर जो क्रॉप का सीजन होता है, जैसे नवंबर में हमारा चल जाता है, नवंबर में उनका कॉटन लगता है और उसका दिसंबर में टूल लगता है, दिसंबर जनवरी में टूल का फूल आ जाता है, उसके बाद ऑरेंज लगता है संतरा का। तो रेंटल पे वो लेके जाते हैं 3 महीना 4 महीने के लिए, और हर महीना का जो रेंट है वो 500 से 600, अगर स्टीमलेस भी का 1500 रुपया वो रेंटल ये करते हैं। तो बादाम के खेत से तो उसका कुछ नहीं, अंटिल एंड अनलेस वहां पे स्प्रे हो, बादाम से उसको कुछ नहीं होता। सर एक और सर एक और क्वेश्चन, उनसे जो उनसे हार्वेस्ट जो लिए जाते हार्वेस्ट हैं में लिए जाते हैं हनी, उसके तो सर्वाइवल उसके पे या फिर सर्वाइवल पे या फिर उनके जो जनरेशन है उसमें क्या इफेक्ट पड़ता उस पे कुछ नहीं उस होता पे कुछ नहीं होता, क्योंकि हनी आप किसी के बच्चों का हनी खाएंगे क्या? किसी के बच्चे का हनी खाएंगे क्या? कोई नहीं खाता, कोई वो हार्वेस्ट नहीं करता। वो ट्रेडिशनल मेथड, अगर आप बॉक्स देखेंगे ना, बेटा ये जो बॉक्स देख रहे हो, ये जो बॉक्स देख रहे हो ना बेटा, ये सुपर चेम्बर है। सुपर चेम्बर का हनी हम खाते हैं। ये फ्रूट चेम्बर है, ये जो है ना, ये फ्रूट चेम्बर है। यहाँ पे वो अपने बच्चों के लिए हनी रखती है, रानी पर नहीं आ सकती है। रानी सुपर चेम्बर में नहीं, वहां पे उसके बच्चे नहीं, और गवर्नमेंट का, लेकिन मॉडर्न बी कीपिंग में वो चीज आता है नहीं। आप उनके हनी को कुछ नहीं करते। आप ये वाला डब्बे का ऊपर का पार्ट का हनी खाते हैं, जहाँ रानी नहीं जाती है, और वो हनी हमारी। Anyone else? है? Anyone else? चल, सर आप लोग हनी बी कीपिंग में पॉलिनेशन करवाते हैं क्या? हाँ, वो मैंने बताया ना कि आपको कि जो हम लोग का रेंटल जो बॉक्स आता है वो पॉलिनेशन के लिए आता है। तो उसके लिए प्लांट्स उसके लिए प्लांट्स भी बहुत सारे उगाने पड़ते हैं। नहीं, वो प्लांट तो उनके क्रॉप्स है, एग्रीकल्चर क्रॉप है जो फार्मिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ट्यूल का दाम लगाया या फिर आपने सनफ्लावर लगाया, तो उसका यील्ड और क्वालिटी दोनों बढ़ जाता है। हम लोग जैसे तरबूज में भी देते हैं, तरबूज जो 4 kg का रहता है वो 6 kg का हो जाता है। हमारे पास में अभी कोटाली में जो जगह देख रहे थे ना, वो तरबूज का खेत था, वहाँ पे 6 6 kg का हो गया। तो ये पर्टिकुलरली पॉलिनेशन के लिए देते हैं। कॉमर्शियल तो हम लोग, हमारे लिए कॉमर्शियल तो फिर वो सही नहीं रहता है, लेकिन हमारे लिए मेन है बीज आर फॉर पॉलिनेशन। प्रोडक्ट तो वो कॉम्प्लीमेंट है, आप पॉलिनेशन के लिए मेन रहता है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। सर इसको हमारे लेवल पे कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने लेवल पे कर सकते हैं, कोई इसमें ये नहीं है। और मुझे तो हमेशा लगता है कि हर इंस्टीट्यूट में एग्रीकल्चर को होना ही चाहिए। सर तो इसके लिए टाइम भी इसके लिए आपको टाइम नहीं देना है। ये एग्रीकल्चर में जो क्रॉप लगाते हैं ना, वो बहुत मेहनत करना है, उसको गड्ढा करना। इसमें आपको खाली देखना है अंदर, आपको मैंने बताया ना, आप IoT टेस्ट कर लीजिए, सेंसर लगा दीजिए, आप बैठे बैठे अपने, हम लोग का जो सेंसर आता है वो ड्राइव पर अपलोड होता है, और ड्राइव से डाटा देख के हमको पता चल जाता है कौन से बॉक्स में प्रॉब्लम है, सेंसर लगा लीजिए। कई लोग अभी भी जैसे एक टाइम ही करते हैं, हम लोग भी करना सब, क्योंकि वो लेट आते हैं तो सिर्फ जाने की परेशानी। अच्छा, क्योंकि देखो पहला तो मुझे ये लगता है कि अगर आपका टेस्ट बहुत अच्छा है, तो जिसका टेस्ट बहुत अच्छा है, 15 सेकंड में हनी का स्वाद गायब हो जाता है। दूसरा मैं बता सकता हूँ, आपके पास में कोई बॉटल होगा, छोटा सा बॉटल लीजिए, उसमें एक मार्क कर दीजिए और उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम भरना है, वॉल्यूम पहले बॉटल का वेट लीजिए, फिर उस वॉल्यूम तक उसको भरिए और फिर से वेट लीजिए, तो उससे आपको हनी का स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगी। और हनी का स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको पता रहता है इस टेम्परेचर में इतना है, तो 1.4 का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है बोलते हैं 27, तो आपको पता रहता हो, तो वो आ रहा है कि नॉर्मल है। और उसमें जैसे पेट्रोल और डीजल का रहता है, आप देखेगा पेट्रोल भराने जाते हैं तो वहां लिखा रहता है स्पेसिफिक ग्रेविटी इस टाइप का, वो प्योरिटी बताता है। तो सबसे सिंपल एक्सपेरिमेंट तो वही है, आप घर में कुछ नापने वाला चीज लीजिए, पहले उसका खाली कंटेनर का वेट ले लीजिए, फिर हनी भरने के बाद उसका वॉल्यूम का ले लीजिए और उससे डेंसिटी निकालिए। Thank you so much, Thank you so much, sir, for this informative lecture.
Now I would request Dr. Sanjay Tiske sir to present present memento memento to our to resource our person, resource person, Dr. Ashish Dr. Jha Ashish Jha sir, as a token of token of love and love and respect from respect our from our college. college. आज मेरे ख्याल से ऑनलाइन प्रेजेंट नहीं करेंगे, 10 ही लोग तो बचे हैं। ये ना है कि ऑनलाइन प्रेजेंटेशन सो मच सर छोड़ करने के बोल तो रही बाद ऐसा लगा कौन सी बी काट दिया। हर साल पे आता हर साल पे आप मैं बता दूं मैं बता दूं सर भले उसको नहीं बोल रहे हैं, अभी हम सर जब नागपुर से आ रहे थे तो इनका बहुत जोरदार एक्सीडेंट हुआ पेंट्री के पास, तो चोट लगी है सर को, हुआ पूरा हॉस्पिटल से जस्ट सीधे सर ये लेक्चर देने के लिए। तो मैं थोड़ा सा धन्यवाद देना चाहूंगा और अब तुरंत हम फोरम शुरू कर रहे हैं। नियम आपको प्रियंका और मुदना बता दीजिए प्लीज। Now start the start the oral oral presentation presentations and and only 5 only minutes 5 minutes will be given to the to the presentation. For the presentations, only 5 minutes will be provided. So without So without wasting wasting any time, I would like to call Shreya Bonmore for her oral presentation. She's from Hislop College, Nagpur. Her topic of presentation is proximate composition and antibacterial activity of honey from feral hives of Apis cerana indica and Apis dorsata in Fentry village, Nagpur, Maharashtra. शेयर करो। Uh, the The chairperson of this technical session would be Dr. Trilok Dev sir from the Department of Botany, Government Digvijay PG Autonomous College. And the session will be co-chaired by Dr. Kiran Jain, Madam. She is also from the Department of Botany, Digvijay College. The reporter for this session would be Jagriti Chandrakar from the Department of Zoology. The organizing team member she is. Good afternoon, everyone. Thank you so much for having me here. Good afternoon, Good everyone. afternoon, I am everyone. Shreya I'm Bonmore, Shreya Kumar, research scholar research from scholar Islop College, from Nagpur. College, My supervisor is Ayush Kumar Jha sir, and I would the like to express my gratitude to gratitude the to the organizers for organizers for giving me this giving me this opportunity to present opportunity my to research present my work research work on on proximate composition approximate and composition and antibacterial activity antibacterial of honey activity of from honey feral from hives feral of hives of Epicerana indica and Epicerana Apis indica and dorsata Apis in dorsata Fetri in village, Fetri village, Nagpur, Nagpur, Maharashtra. Maharashtra. The The Epicerana indica and Epicerana Apis indica and Apis comes under the dorsata comes phylum under the phylum Arthropoda, Arthropoda, class Insecta, class Insecta, order order Hymenoptera, which include Hymenoptera, different which type include of different type of ant, ant, wasp, and wasp, and bees. bees. The infraorder The is infraorder Aculata, is Aculata, superfamily is superfamily is Apoidea, and family is Apidae, and the and genus the is genus is Apis. These Apis. are the These images are of the images Epicerana of indica Epicerana and indica and the Apis dorsata. Apis dorsata. The scope The of scope present of work is present to work is to compare the compare the composition of honey composition of from honey Apis from serena Apis indica and serena Apis indica and Apis dorsata with the dorsata help of with the help AOIC of method AOAC and method to study and the to study the antimicrobial property of antimicrobial honey property of from honey Apis serena from indica and Epicerana Apis indica and dorsata Apis with the dorsata help of with the help of agar-based agar-based diffusion technique. diffusion technique. The aims and The aims objective and of objective of the the research work is research to work is to examine the examine the physico-chemical property physico-chemical of honey property of from honey from Epicerana indica and Epicerana Apis indica and dorsata Apis and to study dorsata the and to study the antibacterial property of antibacterial the honey. property of the honey. The material The method material used method for used for uh, identifying this identifying property this for property for physico-chemical property, physico-chemical we property, have used we five have used parameters five which include parameters which color, include aroma, color, ash aroma, content, ash content, moisture content, moisture and content, pH. and For pH. For color, we used color, we used spectrophotometer, spectrophotometer, and for and for aroma, we aroma, used we used N-nose, N-nose, E nose, which E is nose, which is electric nose. electric nose. For this, we For this, heated we the heated the honey sample honey at sample at to to release aroma release content, aroma and then content, for and then for pH, we pH, used we pH used meter, pH method, and we took and we took time of decay, time of decay, and for and moisture for content, moisture we content, we used used drying method. drying For method. For for drying for method, drying we method, took we pre-wet took of pre-wet crucible, of and then we crucible, heat and it then we heat it on on
105 degree degrees Celsius. Celsius, and And after after that that, we we weighted weighted the the honey honey sample sample again. again. The loss The of loss of weight is weight considered is as the considered moisture as the content, moisture and content, for ash and for content we ash use content muffle we use furnace muffle furnace at 600 at degrees 600 Celsius. degrees For Celsius. this we For this, we pre-wetted the pre-wetted the crucible and then crucible took and 5 then gram took of 5 honey, gram of honey, and then and we then we heat it on the heat it on the hot plate. hot After plate. that we After that, we burn it in the burn it in the muffle muffle furnace, furnace, and and then then we we measure measure the the ash content ash and took the content and readings took of the it. readings of it. For For antibacterial property, antibacterial property, we took two that is bacteria, E. that coli is and E. B. coli and subtilis. B. For subtilis. E. For coli, E. coli is a gram-negative gram-negative bacteria, and B. bacteria, and subtilis B. is a subtilis is the gram-positive bacteria. gram-positive For bacteria. this, we For used this, we used agar-well diffusion diffusion technique. technique. For For this, this, we we first first prepared the prepared the nutrient nutrient agar agar gel, gel, and and then then we we prepared prepared the the mixture of mixture agar of gel and agar gel and E. coli E. and coli B. and B. subtilis. subtilis. This was This was solidified, and solidified, after and that after we that, we prepared the prepared hole the in hole that in agar that gel agar with the gel help of with the help of micropipette micropipette of 6 of mm, 6 and then mm, we and then we poured this poured mixture, this mixture, poured the diluted honey of diluted honey of 25% 25% and and 50% of both the 50% of honey both the sample, honey sample, and then we let and it then we let incubate it for incubate for 24 hours 24 hours for at at 37 degrees 37 Celsius. degrees And after Celsius, that and we after took that, the we took the readings readings of of inhibitory area, that inhibitory is area, that is clear 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 surface around surface the around the veil, veil, and and it is took took in in millimeters. millimeters. So result So and result discussion and of the discussion of the physicochemical property. physicochemical property. The Serena The indica Serena indica showed color showed color white, white, and white, for and Apis for dorsata it was dorsata dark it umber was color. dark umber color. The The aroma of aroma of acetic aroma of Apis serena Apis indica serena was like indica was like acetic alcohol, acetic and of alcohol, and of Apis dorsata Apis it was dorsata it was ester. ester. The ash The content, ash as we can content, see, as it we was can see, quite it was similar. quite For similar. For Serena indica it Serena was indica it was 18.57. 18.57. conclusion भी आई है Conclusion भी आई है, आप time हो रहा है. Here we can Here we can see see the the honey honey color color of of Apis serena Epicerena indica indica was was white, white, and and the honey honey of of Apis Apis dorsata dorsata is is dark dark umber umber in in color. color. Here Here we can see that moisture graphically that content in moisture content Epicerena in indica is Epicerena quite indica lesser is than the quite lesser than the Apis dorsata. Apis pH is dorsata. also pH is acidic also in acidic in Serena indica, and Serena indica, and in in Apis dorsata it Apis was dorsata it was quite less quite acidic less than acidic than Apis Apis serena indica. Serena The indica. ash The content, ash we can content, see that we it can is see that quite it more is quite more higher in higher in Apis dorsata. Apis dorsata. The result The of result of antibacterial activity, antibacterial we can activity, see we that can see that in figure in 3, figure the 3, the honey of honey Apis of dorsata Apis has more dorsata has more antibacterial activity antibacterial activity as compared to as the honey compared to of the honey of Apis serena Apis indica. serena indica. And And the in figure 4, in we figure can see 4, we that can see that the uh, B B subtilis shows subtilis shows the more more sensitivity towards sensitivity the towards the so से so, here we can see here that we E. can see coli that E. is coli is less. less. B B. subtilis is more subtilis is more reactive towards the and honey, and E. coli is E. less coli is reactive less towards reactive the as compared to B. subtilis. These are my These are my references. references. Thank you. Thank you. This This presentation is presentation is this presentation this is open for presentation is open discussion. for If you have discussion. any If you have questions. any questions, Thank you. thank you, Shreya. for For the next presentation, I would call Ankush Kumar from Hislock College, Nagpur, for his presentation on optimizing honeybee management through floral calendars, a strategic approach. Ankush Kumar. इसको ले जाओ यार Good afternoon, everyone. I'm Ankush Kumar from Hislock College. My topic is optimizing honeybee management through floral calendars.
Uh, उसको दिए ना, बताया ना। my topic is directly aligned with the theme of our today's seminar. Let's explore what is a floral calendar. Okay. Floral calendar is a timetable that indicates to the keeper the approximate date and the duration of blossoming period of the important honey and pollen plants in the area. Basically, फ्लोरल कैलेंडर हमें ये बताता है कि कौन से टाइम में कौन सा फ्लावर खिलने वाला और पोलन एंड हनी अवेलेबल है. Actually, this is the sample of floral calendar we made to analyze the availability of pollen and nectar. My aims and objectives is to understand the concept of floral calendar and their role in beekeeping and to study the effect of floral calendar on bee health and colony management. कि फ्लोरल कैलेंडर कैसे बी हेल्थ एंड कॉलोनी मैनेजमेंट में हेल्पफुल है और टू इनहेंस द पॉलिनेशन efficiency of honeybee. Honeybee is the best pollinator. So from uh, from floral calendar we can analyze that and to analyze the floral availability that affects honey production and quality. For that, my methodology is monitoring honeybee colony activity using hybrid. Suppose हमने जो बी हाइव इंस्टॉल करा है अपने इसमें उसका हम लोग प्री वेट करते हैं पहले मतलब और उसके बाद जब उसमें हनी बनना शुरू होता है उसके बाद का जो वेट होता है तो वो एनालाइज करके हम ये निकालते हैं मतलब पहले का वेट फिर बाद का वेट फिर जो बाद का वेट होता है वो एक्चुअल वो वेट होता है colon. So second is identifying plant species visited by bees and accessing nectar pollen collection behavior. तो बीज जो होती है वो अपने डब्बे से 1 किलोमीटर के रेडियस में जाती है तो अगर वो कौन कौन सा प्लांट प्रेफर कर रही है उसके लिए हमको वो भी हम ऑब्जर्व करते हैं एंड रिकॉर्डिंग फ्लावरिंग ऑनसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट प्लांट स्पीशीज. वो फ्लावर का ऑनसेट कब होता है कि वो हमको ये करना पड़ता है मतलब हमको ध्यान रखना होता है एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा एंड कंपाइलेशन ऑफ फ्लोरल कैलेंडर. दिस इज द रिजल्ट की मतलब बीज बेसिकली ये ऑयल सीड क्रॉप्स पे ज्यादा मतलब ये मतलब पॉलिनेट करती है मतलब वो उसको बहुत ही ज्यादा प्रेफर करती है ऑयल सीड क्रॉप्स को. तो हमको ये फ्लोरल कैलेंडर से मतलब ये हमको बेनिफिट होता है हमको. थैंक यू. Any questions? Any questions? For the next For the next presentation, I would like to call Shweta Madhukar Lakhote from Anand Niketan College, Varora, Chandrapur, Maharashtra. Our topic of presentation is nesting patterns and colony abundance of Apis dorsata in Chandrapur district, India, a habitat-based study. Shweta? Yes, sir. 5 minutes. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. फर्स्टली मेरा सबसे पहला इंस्पिरेशन है डॉक्टर आशीष झा सर क्योंकि उन्हीं के वजह से मैंने ये टॉपिक रिसर्च के लिए सिलेक्ट किया एंड माय टॉपिक नेम इज द nesting pattern and colony abundance of Apis dorsata in Chandrapur district, a habitat based study. My research center is Anand Niketan College, Anandavan, Varora, and my research guide is head of department of zoology, Dr. Arvind Sawane sir, and along with the Ashish Jha sir. Here is a picture of the tree, and on that picture various Apis dorsata hives are present. And this picture I was taken in 2022 in the Tadoba Andhari Tiger Reserve, Maharashtra.
Although Chandrapur district is rich in natural resources, industrialization in the last couple decades has caused a serious impact on the biodiversity of the region. Urbanization and excessive use of pesticides in agriculture, which have a less serious impact on the life cycle of the Apis dorsata and the production of the honey. Importance of this topic includes information about the favorable geographical region of Apis dorsata hive construction. It also provides the region where large number of Apis dorsata hives are found. Most preferable season for the Apis dorsata nesting pattern, and it also enhances the knowledge of sources which are required for the honeybee survival. Since the studies on nesting pattern and colony abundance of Apis dorsata of bees are very less in the Chandrapur district, and this paper is intended to provide the baseline and first-hand information for the future rock bee. This Apis dorsata, also called as the rock bee in Chandrapur district, is called as the Agya Masha bolte isko, and is also called as the giant honey bee management strategy. Materials and methods. The field study was conducted from May 2022 to December 2023, and I was selected the 10 talukas in the Chandrapur district. Total talukas are in the Chandrapur district is 50, but I was visited on only the 10 talukas, and I found more than 300 Apis dorsata species in the forest, agricultural, industrial, as well as the residential area. And photographs were captured with the help of Nikon camera. Study area in Chandrapur district. Here is the map of Chandrapur district, and here are the all 15 talukas are located. There is a beautiful picture also found in the Tadoba Andhari Tiger Reserve, and here is a one Apis dorsata hive present. Also the in the Varora College campus there is the Apis dorsata hive. Second one is the Tadali region on the lighthouse. Next one is the Brahmapuri on the water tank, overhead water tank. There are also more Apis dorsata hives are present. Result and discussion. Table showing the seasonal distribution hives in different habitat in Chandrapur region. In summer, monsoon and winter, I found the more hives in the winter season and also in the forest area, on the trees and also the agricultural region. Because in the agricultural region and the forest area, there is a Ma'am, please conclude. sources are available for the honey bee for nectar, pollen, and also on the water tanks हमें बहुत सारे हाइव्स दिखते हैं क्योंकि जो हनी बी होती है वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. वाटर की जरूरत होती है, नेक्टर का भी जरूरत होता है, पोलन की भी जरूरत होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी. The study of Shraddha, please conclude. Please come to your conclusion part. Okay. The winter season had the highest number of colonies. That means 62.46 colonies are found in the winter season, then followed by the summer 29.72%, and then the monsoon season is the 7.80%. Conclusion. The result of the study concluded that the rock bee favored trees, building, water tanks, and also the inaccessible elevations. It was observed that the greater number of Apis dorsata hives are found on the trees in the forest and the agricultural region, followed by the water tanks and followed by the industrial areas. Okay. Thank you. Questions? For the next presentation, I would like to call Ram Krishna Ratiram Bhelave sir from Anand Niketan College, Varora, Chandrapur, Maharashtra. This topic of presentation is enhancing pulse crop yields, the vital role of bees in pollination.
गुड आफ्टरनून एव्हरीवन. प्रथम नमस्कार गुरुला. आदरणीय माझे गुरु प्रिन्सिपल MC काळे सर, आनंद निकेतन कॉलेज वरोरा, सोबत माझे गुरु ये वेड़े मार्गदर्शन समय समय पे मुझे मार्गदर्शन करते हैं. मेरे ऐसे गुरु और जिनके कारण मैं टॉपिक दिया और उनके अंडर में मेरी PhD 100% चल रही है, ऐसे मेरे गुरु को नमस्कार. आशीष कुमार झा, इस्लाम कॉलेज. तो आइए मेरा टॉपिक है, वैसे ही 2 मिनट लूंगा मैं आपसे. ये कार्यक्रम के जो सभी यहाँ बैठे हुए गुरुजनों को, डॉक्टर गुप्ता मैम प्रिंसिपल, डॉक्टर KL दामले सर, डॉक्टर संजय तिस्के सर, डॉक्टर गुरुप्रीत सिंह भाटिया, डॉक्टर मंजीत अली, प्रोफेसर चिरंजीव पांडे सर, डॉक्टर वंदना मिश्रा मैडम, डॉक्टर अश्विनी कुमार, सभी को मेरा नमस्कार. और रिसर्च स्कॉलर बैठे उन्हीं को भी मेरा नमस्कार. तो मैं अपना टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ. मेरा टॉपिक है enhancing pulse crop yield, the vital role of bees in a pollination. बीज का बहुत बड़ा रोल होता है पॉलिनेशन. अभी तक अपन ने सुने, हमारे गुरु से भी आपने सुने हैं कि विदाउट फर्टिलाइजेशन होता नहीं. अगर कोई भी स्पीशीज को अपने को बढ़ाना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, तो यहाँ अगर विकास करना है अपने को प्लांट का, तो वो फर्टिलाइजेशन अति आवश्यक है. और वो फर्टिलाइजेशन की जो पहली प्रोसेस है उसे कहते हैं अपन पॉलिनेशन. अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा प्लांट का, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा प्लांट का, तो अपने को सीड फ्रूट नहीं मिलेंगे. और सीड फ्रूट नहीं मिलेंगे तो अपने को आने वाले नए प्लांट नहीं मिलेंगे. उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल प्यूरिफिकेशन होगा. ये सभी आता है काय में अपने पॉलिनेशन में. यहाँ ओनली पॉली अपने को हनी बी से ओनली शहद ही कैप्चर करना ये नहीं है, तो अपने को इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल और प्लांट का मीन्स अपने को प्रोडक्शन भी करना आवश्यक. Only 5 minutes will be provided. 5 मिनट. Only 5. ओके. तो मेरा टॉपिक है पल्सेस में पॉलिनेशन होता है, क्योंकि पल्सेस में कॉम्प्लेक्सिटी अधिक होती है, माइक्रो फ्लावर होते हैं. और मेरा टॉपिक है स्टिंगलेस बी का. यह माइक्रोफोन, इसका साइज होता है मैडम सभी सर लोग 2.77 to the 4.07 इतना माइक्रो साइज होता है mm में. और ऐसे छोटे छोटे फ्लावर में जहाँ बड़ी जा नहीं सकती वह एंट्री करते हैं और वो पॉलिनेशन आता है. उसके कारण अपने को पॉड का परसेंटेज बढ़ता है, सीड का वेट बढ़ता है, सेट ऑफ द पॉड बढ़ते हैं और अपने को यील्ड में ग्रोथ होती है. और इसके कारण अपने किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा होता है. ऐसे में बी पॉलिनेटर पे कुछ मैं एग्जांपल कंपैरेटिव किया हूँ. उसके लिए अपन मेरा ये मैं ऐसे द कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टिंगलेस बी इन द पॉलिनेशन ऑफ पल्स क्रॉप्स एंड देयर द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन क्रॉप. नेक्स्ट मैडम 4 पे आ जाइए. चार्ट आएगा एक टूल है केजनस केजन, इस पे 4 पे आ जाएगा. देखिए जो केजनस केजन साइसर एरेंटियम, जिसे अपन केजनस केजन को पिजन की टूल कहते हैं, साइसर एरेंटियम को चना कहते हैं, विग्ना रेडिएटा ग्रीन ग्राम और विग्ना मुंगो उड़द है उड़द और विग्ना एंगुएटा काउपी. इनका अपन ने दो स्पॉट लिए, एक ओपन पॉलिनेशन और दूसरा ग्रीन केज पॉलिनेशन. पॉली हाउस में इसे अपन करते नहीं, तो ओपन पॉलिनेशन में नियर अबाउट 11,000 स्क्वायर फीट जगह लिए. इधर ओपन अपने अंडर द केज पॉलिनेशन में ग्रीन में 11,000 सेम जगह लिए. उसमें अपन एक ग्रीन हाउस बनाए, उसमें अपन में प्लांट लगाए, इधर लगाए. सेम माइक्रोन्यूट्रिएंट सेम सॉइल थी, लेकिन अपन में इसमें जो 11,000 नियर अबाउट स्क्वायर फीट की एरिया है जिसमें अपन ने पॉली हाउस की है, उसमें अपन 20 स्टिंगले बी बॉक्स डाले.
और उसके कारण वहाँ ज्यादा से ज्यादा बी ने क्या की, पॉलिनेशन किए। यहाँ कंपेयर दिख रहा है कि पहला चार्ट ओपन पॉलिनेशन विदाउट स्टिमुलस बी का है, ग्रीन हाउस केज विद स्टिमुलस भी है। इसमें देखिए केजनस को जो पर पॉट को प्लांट 253 इतने पॉट आते हैं। इधर आइए तो अपने पॉट 378 पॉट आते हैं। पर सीड पॉट 3 to 4 आते हैं, इधर 4 to 7। वेट ऑफ द पर 100 सीड का 15 ग्राम है, 20 ग्राम है। नियर अबाउट 25 to 30% इतना यील्ड इंक्रीजेस होता है, डिसीज रेजिस्टेंट होते हैं, फर्टिलिटी बढ़ती है, पॉट का वेट बढ़ता है, सीड का वेट बढ़ता है। और हमारे किसानों को, फार्मर को इसको ज्यादा से ज्यादा अपने को ये मिलता है, क्या उत्पादन मिलता है। और to the conclusion, sir. Please come to the conclusion. नेक्स्ट मैडम, आइए कंक्लूजन। स्टिमुलस बी का बहुत ही बड़ा क्रूशियल रोल है पॉलिनेशन में। इसके कारण यील्ड सीड क्वालिटी बढ़ती है। रिसर्च हाइलाइट्स इंपॉर्टेंट conserving and promoting stingless bee population is a part of integrated pest management and sustainable agriculture practices. By focusing on the bees as a pollinator, farmer can potentially reduce the need for the external pollination services or chemical while benefit from the increase of the crop production. और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा मैडम और सर, मेरे गुरुजन वर्ग और विद्यार्थी, कि if the bee disappear from to the surface of the earth, man would have no more than the 4 years equality. अगर बी ग्लोबल से अपने अर्थ के सरफेस से वो निकल जाते, आप मारते हो, उसको किल करते हो, तो आने वाले 4 साल में यहाँ खाने के लिए नहीं मिलेगा, खाने के लिए नहीं मिलेगा, तो लाइफ साइकिल व फूड चेन बंद हो जाएगी। और इसके कारण इसके इफेक्ट हो जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ह्यूमन बेबीज का आएगा। मैडम चैलेंजेस ये हैं सर कि पॉलिनेशन जो करते हैं बी, तो अपन इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का वापर करते हैं। इसके कारण बी कॉलोनी कोलैप्स हो सकती है, नर्व सिस्टम डैमेज हो सकता है, इम्यूनिटी कम होती है। और इम्यूनिटी कम होती है कि उसके फोरेजी जो बिहेवियर उसके कम हो जाते हैं, और वो पॉलन ग्रेन नहीं ली जाती, बी क्या होती है, कोलैप्स हो जाती है। क्लाइमेट चेंजेस के कारण होता है, और देन डिसीज पैरासाइट अफेक्ट करते हैं। तब ये चैलेंज को अपने को करना है कि उनकी सुविधा उसके कारण हो, अपने को अच्छे से अच्छे उत्पादन मिलता है। स्ट्रेटेजी टू इनहेंस द बी पॉलिनेशन इन द पल्स, एस्टैब्लिशिंग द बी फ्रेंडली फार्मिंग करना है, प्रैक्टिसेस, फार्मर एजुकेशन देना है, रिड्यूसिंग द पेस्टिसाइड करना है, अडॉप्टिंग डायोसिटी क्रॉप प्लांटिंग का फ्रेंडली प्लांट लगाना है, मोनोकल्चर अपने को करना नहीं। Thank you, sir. We have humble request to the presenter. Please टाइम का ख्याल रखें, विद इन टाइम आप अपना प्रेजेंटेशन कंक्लूड कीजिए। हम्बल रिक्वेस्ट है सारे प्रेजेंटर। Only 5 minutes will be given for the presentation, so you need to stick to the time schedule. For the next presentation, I would like to call Purnima Saroj Madam to give a presentation on the topic Monitoring Water Quality Index of Sonar Pal Devara Village, Jagdalpur, Assessment and Evaluation of Water Quality. Hello. International Seminar on Sustainable Development and Climate Change के इस आयोजन में मुझे अवसर देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विषय है मॉनिटरिंग वाटर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ सोनारपाल देवड़ा विलेज, जगदलपुर, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ वाटर क्वालिटी। My associates Dr. Pratibha S. Guru from Department of Chemistry, Bharati Vishwavidyalaya, Durg. The water quality of Sonarpal Devda village in Jagdalpur, Chhattisgarh has been a subject of growing concern due to increasing pollution from domestic and agricultural activities. This research aims to assess the water quality of key water bodies in the village using the water quality index method, which combines multiple water quality parameters into a single index. मेरा उद्देश्य यही है कि मैं गांव में जो पानी की समस्या है, वहाँ पे जो इम्प्योरिटीज है,
उसे पैरामीटर में हम नाप कर उनकी जो क्वालिटी है उसके प्रति लोगों को अवेयर करें, जागरूक करें। इसके लिए मैंने सोनारपाल गांव की अलग अलग जगहों में नेक्स्ट वाटर सैंपल्स कलेक्ट किया। मेरी मेथोडोलॉजी है अलग अलग सीजन में और गांव की पूरी जगह से अलग अलग वाटर बॉडीज से मैंने सैंपल कलेक्ट किया और सभी का डिफरेंट पैरामीटर्स पे कंक्लूजन उनके एक्सपेरिमेंट्स किए। जैसे नेक्स्ट प्लीज। डाटा कलेक्शन मेथड से मैंने एक्सपेरिमेंट किया। नेक्स्ट प्लीज। दिस इज द एरिया ऑफ छत्तीसगढ़, जगदलपुर एंड बस्तर। दिस इज द मैप। नेक्स्ट प्लीज। दिस इज द एरिया ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ सोनारपाल देवड़ा एरिया। इनके अलग अलग पैरामीटर्स पे वाटर को हमने एक्सपेरिमेंट किया। जैसे पीएच, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, टीडीएस, एक्सेट्रा डिफरेंट। नेक्स्ट टेबल लाइए प्लीज। इनके कलर, ऑर्डर एंड क्वालिटीज को अलग अलग पैरामीटर पे डिसाइड किया है एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, जैसे टाइट्रेशन एंड डिफरेंट मेथड ऑफ कंक्लूजन। नेक्स्ट वाटर इंडेक्स क्वालिटी कैलकुलेशन के लिए मैंने सभी जो नेक्स्ट प्लीज फॉर्मूला दिखा दीजिए। नेक्स्ट यस, दिस इज द वाटर क्वालिटी इंडेक्स। आई वुड कंक्लूड दैट कि जो इनकी पैरामीटर्स हमने यूज किए जिसकी वैल्यू 0 to 25 है मीन्स एक्सेलेंट है वाटर क्वालिटी, 26 to 25 गुड, 51 to 75 पुअर एंड 76 to 100 वेरी पुअर एंड greater than 100 unfit for consumption। तो वाटर क्वालिटी एनालिसिस मैंने किया है जिसमें पॉन्ड 1 जो सीजनल वाटर बॉडी है उसकी वाटर क्वालिटी इंडेक्स 65 आई है जो कि पुअर है। सेकंड पॉन्ड जो एग्रीकल्चर रन ऑफ एरिया से लिया उसकी वाटर क्वालिटी इंडेक्स 80 है जो कि वेरी पुअर है। और वेल का लिया है ड्रिंकिंग वाटर सोर्स का जिसकी वाटर क्वालिटी इंडेक्स 45 है जो कि गुड है जिसे हम कंजम्पशन कर सकते हैं। और शेलो वेल कंटेमिनेटेड वाटर ये जो है इसका वाटर क्वालिटी इंडेक्स 90 आया है जो कि अनफिट फॉर कंजम्पशन है। नेक्स्ट ये सारे जो पैरामीटर्स पर मैंने कंक्लूजन किया उसके रिजल्ट है। प्लीज सी द स्लाइड्स एंड डिस्कशन। नेक्स्ट प्लीज। The primary source of pollution in the village include agriculture runoff, domestic water, waste water and seasonal changes। इस पर डिपेंड करता है उसका कंटेमिनेशन। और इसके लिए मैंने गांव में रिकमेंड किया कि प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, implement organic farming practice and reduce the use of chemical fertilizer and pesticide to decrease water pollution from agricultural runoff। Yes, this is the conclusion। The study of water quality in Sonarpal Devra village, Jagdalpur reveals significant water quality concerns, especially in seasonal ponds and shallow wells. The water quality index method provided a comprehensive assessment of water quality, highlighting the need for better water management practice, including improved sanitation, improved sanitation, sustainable agriculture, and regular monitoring. Addressing these issues will be contribute to ensuring clean and safe water for residents of village and preserving the local aquatic ecosystem। This research paper provides a detailed assessment of water quality in Sonarpal Devda village, Jagdalpur, by employing the water quality index method and identifying the main sources of pollution, ultimately offering recommendation for improving water quality in the region। Thank you so much। Any questions?
For the next presentation, I would like to call Dr. Neetu Raj Panikar from St. Thomas College, Bhilai. Her topic of presentation is captive rearing of big fin reef squid. Captive rearing of big fin reef squid, debut to this Lesoniana, exploring the prospects of juvenile sea ranching and to replenish and sustain fisheries. So, cephalopod rearing has been done globally in both natural and captive conditions. Some of the key researchers and their studies are shown in the figure. In cephalopod culture in India, which has been studied by Algar Sami, Sarveshan, Shivalingam and Pillai, and also my guide, Anil sir has reared Cephala inerbis in captive conditions and also Cephala to this Lesoniana in captive conditions. So, coming to the topic, sea ranching. So, as we all know, sea ranching is a marine aquaculture practice. Sea ranching is a marine aquaculture practice where juvenile marine organisms are bred and raised up to the juveniles. Then it is released into the wild to replenish natural populations. So, coming to the materials and methods. So, I have tried fishing gears like fish aggregating devices, bottom set to gill nets, coconut spadices, and nylon rods. So, you can see the study site, Vizhinjam Coast, Kerala. Later, a collection has been done from shore scenes and also from the submerged objects, which have been hung from the raft moored at the Vizhinjam Bay. Hatchery, after bringing the eggs into the hatchery, proper hatchery conditions were maintained. 1,000-liter FRP tanks were used for hatching. Temperature was maintained optimum. 27 to 30 degrees Celsius has been maintained. So salinity, pH, dissolved oxygen, ammonium, nitrate, everything was properly maintained. Coming to the food and feeding, just after hatching, Sepioteuthis lesoniana started to feed mysids, Artemia nopliae, marine fish juveniles. Later, supplementary feed were given, like freshwater fish were also tried. Later, in the growing stages, dead fish also supplied, anchovies, sardines, dried Asatus indicus. Daily 2 times feeding was given. Coming to the result, you can see the egg clusters of Sepioteuthis lesoniana. So 86% hatching success has observed. Maximum incubation period was 21 days. So you can see some of the images which I have taken during the study. We can see the incubation tank and rearing tank, egg capsules you can see here. So these are some of the stages of development of Sepioteuthis lesoniana in the captive conditions. Next, ma'am. So Sepioteuthis lesoniana has reared up to 161 days. Adult stage. We can see the images here. So when we are not given proper feed, they started to cannibalize. You can see here cannibalism. So this is the growth graph. So coming to the discussion, conclusion. So previous. So coming to the future prospects of sea ranching. So what are the benefits of sea ranching of Sepioteuthis lesoniana, especially stock enhancement? So helping to restore declining populations of this species. So it was observed that Sepioteuthis lesoniana has shown rapid growth and high fecundity. That's why it is one of the conducive species for sea ranching. And also it is supporting the fisheries and livelihood of many people. And also it is reducing the pressure on wild stock. We are rearing this species in the hatchery and we are releasing these juveniles into the wild in order to replenish the stock. Also, we can maintain the ecological balance. Means it is helping to maintain the food chain dynamics by ensuring that women. Please conclude. Coming to the conclusion. Next one. So Sepioteuthis lesoniana shows strong potential for sea ranching
sustainable practices, including optimizing field and habitat restoration. That is the key to success. And sea ranching can enhance marine biodiversity and also fishery sustainability. So, thank you so much. That's all. Thank you so much, ma'am. Her presentation is open for discussion. If you have any questions. Okay, thank you, ma'am. For the next presentation, I would like to invite Khushbu Lilaria. She is from Pandit Ravi Shankar Shukla University, School of Studies in Biotechnology, PTRSU. Her topic of presentation is isolation of cellulose producing bacteria from banana pseudostem. Good afternoon, everyone. Myself, Khushbu Lilaria, and I am here to present my work on the topic isolation of cellulose producing bacteria from banana pseudostem. So, we know that we are currently facing the harsh reality of global climate change. One of the reasons for the global climate change is the huge amount of waste production. So, the waste that is produced, if it is not dumped properly, it causes air, water, and land pollution, and which affects the natural flora and fauna along with the environment. One of the category of the waste is the lignocellulosic waste. So lignocellulosic waste are those kind of waste that include plant dry matter, such as municipal waste, agroforestry waste, byproducts of pulp and paper industry waste, etc. So the worldwide production of the lignocellulosic waste, it ranges from here as we can see in the screen. So in this I have seen that banana plantation produces 220 tons of waste every year per hectare. And in this banana pseudostem, it accounts for around 60% of the banana plant, representing a substantial waste component in the banana plantation. So that's why to channelize this waste into some usable alternative product, enzyme production is done. Specifically, cellulase enzyme is produced. So if before going to the cellulase enzyme, let's first understand the structure of the lignocellulosic biomass. So it's having three components: cellulose, hemicellulose, and lignin. And in this cellulose, we know that's a primary constituent of the plant cell wall, and it's also the predominant polysaccharide on earth. So according to the market research report of 2023, the cellulose market is expected to rise from $24.11 billion to $44.5 billion by 2030. So as we can see, cellulose it is accessible from variety of resources, and also it is present in abundant amount. That's why it's very much promising resource for the biological conversion. So coming to the cellulase enzyme, so it's a multi-enzyme complex. It's having three components: endogluconase, exogluconase, and beta-glucosidase. And all these three enzymes work synergistically to break down cellulose into glucose. So the major significance is that degradation of this cellulose is very much important due to the fact that this carbon dioxide is fixed by the plant through the process of photosynthesis to produce cellulose. And when the cellulose is degraded, it releases again carbon dioxide, which is again released into the atmosphere, which is then again captured by the plants. Another significance is that it can be used in different industrial applications like biofuel industry, detergent, textile industry, food industry, paper and pulp industry, fruit juice industry, etc. So the major objectives and methodology is that collection of fresh banana pseudostem for cellulose production, and after that isolation was done, in which the substrate was mixed with the sterile distilled water in a flask, and then it was incubated to produce cellulase enzyme. Then serial dilution was done, and then it was streaked in CMC plates. Further, the screening was done by using grams iodine solution, and then quantitative test was performed by CMC method. So the results, three experiments were done for screening. In first, we got 8 bacteria which showed 2 qualitative tests positive, and in second, again 8 bacteria were isolated, in which 8 were found positive, and in last, the 6 bacteria were isolated, in which 6 were positive. And total 16 were showed positive qualitative test, in which the last 4 were showing the maximum, in which out of 4, the BS4 was showing the maximum production. BS2 was showing the maximum production for cellulase. So the result is that BS2 was showing maximum production using banana pseudostem as a substrate, and that's why this bacterium and cost-effective substrate was holding promise for the industrial application.
Excuse me, ma'am. Please conclude your presentation. So that's why cell is getting increased day by day at industrial level. That's why it's very much important to produce this enzyme. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Our Our presentation is open for discussion. If you have any If questions, you have any questions, okay, thank you. thank you. For the next For the next presentation, I invite I invite Ankita Rathi from from School of Studies in Biotechnology, Pandit Ravi Shankar Shukla University, Raipur. A topic of presentation is alleviation of salinity stress in rice using potassium citrate and magnesium citrate. Good afternoon, everyone present over here. My name is Ankita Rathi. I'm presenting a research work entitled Alleviation of Salinity Stress in Rice using Potassium Citrate and Magnesium Citrate. As we all know that rice is one of the dominant staple crops and a major source of carbohydrates for more than 1/3 of the world population. And due to the adverse climatic conditions, the overall crop production is declining. This climatic conditions also give rise to various abiotic stresses, include salinity stress, which is becoming one of the major concerns, and especially for the rice production, because rice is one of the crops which is very susceptible to salinity. This research work includes the importance of rice crop. This This research work includes a basic introduction of how salinity impacts the rice crop production, the methodologies used in this research work, the results discussion and conclusion. So first of all, as I have said that rice is an important crop which is negatively affected by the salinity stress. Salinity stress is the accumulation of or hyperaccumulation of NaCl in the soil, which negatively affects the overall production of the crops by creating various physiological imbalances inside the crop. For example, creating osmotic stress, ionic imbalance, generation of various reactive oxygen species. All of this give rise to the altered composition in the plants, altering their physiological and biochemical processes and ultimately hampering the growth of the plants. Osmotic stress being one of the major reasons, because due to the hyperaccumulation of sodium and chloride ions in the roots, the accumulation of various ions, important ions, that is potassium, sodium and calcium ions, gets neglected, and these are the ions which are responsible for the physiological processes in the plants and are required for the proper growth of the plants. So in this study we have used potassium citrate and magnesium citrate in an exogenous form for alleviating the negative effects of salinity stress. And what we have done in this study is that we have exogenously applied various concentrations of potassium citrate and magnesium citrate under salinity condition, and after 21 days of incubation in the in vitro condition, we have analyzed their morphological and biochemical parameters. Biochemical parameters includes both enzymatic and non-enzymatic parameters. And what we have observed is that as the salt concentration increases in the rice seedlings, a decline in all the morphological characters in the plants was observed, and at 68.4 millimolar concentration of NaCl, we have observed a significant decline in all the morphological parameters, especially shoot length and root number. Further, what we have done is that we have taken this particular salt concentration and amended it with various concentrations of potassium citrate, magnesium citrate and sodium citrate, and after the analysis of morphological parameters, we concluded that 0.46 millimolar of magnesium citrate and 0.16 millimolar of potassium citrate in the presence of salinity stress, it amended the negative effects of salinity stress by enhancing the shoot length, root number and root length. So the salt stress seedlings and these two treated seedlings were further considered for the biochemical analysis, and after the biochemical analysis we observed that the total sugar and the total soluble sugar followed the same trend. In the salt stress seedlings, both of these parameters declined, while in both the treated seedlings, both of these parameters increased. Further, in the protein concentration, the salt stress seedlings shows an increased protein concentration and was further enhanced in the salts in the treated seedlings. As for the proline concentration, proceed to the conclusion.
Yes, ma'am. Just a minute. Now, for the enzymatic parameters, all the three parameters were enhanced in the all the three parameters were enhanced in the treated seedlings as compared to the soil stress seedlings. This research work concludes is that first, electrical conductivity of 4 decisiemens per meter creates salinity stress in the plants, which hampers the growth of the plant. And secondly, exogenous application of potassium and magnesium citrate may have the capability to alleviate the negative effects of salinity stress. This preliminary work may give a roadmap to the future research prospects, which will give rise to sustainable agriculture and which will also enhance global food security against the adversities of the climate change. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. If you have any questions for the next presentation, I invite Dr. Virendra Kumar Sahu. He is going to present on, his presentation will be in Hindi. It is Jalvayu Parivartan और वैश्विक तापमान. वीरेंद्र कुमार साहू sir. कौन कहता है कि वैश्विक तापमान कम नहीं हो सकता? कौन कहता है कि वैश्विक तापमान कम नहीं हो सकता? एकजुट होकर बड़ी कोशिश तो करो यार। देश के कोने कोने से बड़ी ही श्रद्धा आस्था के साथ उपस्थित विद्वानों, वैज्ञानिकों और हमारे महाविद्यालय के प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापकों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार साहू, अतिथि व्याख्याता, हिंदी विभाग, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगांव। मेरे शोध पत्र का विषय है जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान। हमारे चारों ओर के वातावरण को पर्यावरण कहा जाता है। वास्तव में पर्यावरण एक ऐसी विशाल व्यवस्था है जो कि निरंतर परिवर्तनशील है। आज पर्यावरण की समस्या विश्वव्यापी हो गई है। किसी एक देश में किए गए क्रियाकलापों का प्रतिकूल प्रभाव विश्व के दूसरे देशों में पड़ सकता है। कई बार इनके प्रभाव विश्वव्यापी या ग्रहव्यापी होते हैं। पर्यावरण के एक ऐसे ही एक खतरे को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है, जिससे विश्व वातावरण का तापमान बढ़ जाता है और दुनिया भर में जलवायु संबंधी अनेक परिवर्तन होते हैं। एक कालावधि में जलवायु में हुआ कोई भी परिवर्तन, चाहे वह प्राकृतिक परिवर्तन के चलते हुआ हो या मानव गतिविधियों के कारण, जलवायु परिवर्तन कहलाता है। जलवायु परिवर्तन अंग्रेजी के क्लाइमेट चेंज का हिंदी रूपांतरण है। हमारी धरती प्राकृतिक तौर पर सूर्य की किरणों से ऊष्मा प्राप्त करती है। ये किरणें वायुमंडल से गुजरती हुई धरती की सतह से टकराती है, फिर वहीं से परावर्तित होकर पुनः लौट जाती है। धरती का वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना है, जिनमें कुछ ग्रीन हाउस गैसें भी शामिल हैं। इनमें से अधिकांश धरती के ऊपर एक प्रकार के प्राकृतिक आवरण बना लेती है। यह आवरण लौटती किरणों के एक हिस्से को रोक लेता है और इस प्रकार धरती के वातावरण को गर्म बनाए रखता है। अभी कुछ वर्षों में जिस समस्या पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक ध्यान दिया गया है वह है पर्यावरण की क्षति। हमारे पर्यावरण पर आया वर्तमान संकट मनुष्य द्वारा आर्थिक विकास के क्षेत्र में की गई प्रगति का प्रत्यक्ष परिणाम है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में मनुष्य ने विश्व पर्यावरण के सामंजस्य एवं सुखद संतुलन को अंधाधुंध भंग किया है, जिससे अनेक प्रकार के पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हुए हैं। अतः मनुष्य को पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने आर्थिक विकास कार्यक्रमों में अनेक प्रकार के नियंत्रण एवं संतुलन लाने होंगे। भूमंडलीय तापमान का पर्यावरण पर प्रभाव एक धीमे जहर के रूप में फैलता जा रहा है, जिसका प्रभाव धीरे धीरे लेकिन एक गंभीर संकट के रूप में हमारे सामने है। हम सभी एकजुट होकर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। वैश्वीकरण के इस युग में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन करने वाले कारणों पर विचार करके इसे कम करने वाले उपायों को अपनाकर इस भयावह समस्या के निदान में हम सभी अपना योगदान दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। Sir, thank you, sir. For the next presentation, I invite Chandrakala from Government PYT Autonomous PG College, Durg. Her topic of presentation is
Effect of different mill effluents on fish behavior. Good evening, all. I am Chandrakala. I am Chandrakala. Good evening, all. I am Chandrakala. I am here presenting my review presentation on effect of different meal effluent on fish behavior. Here are contents. Introduction. As we all know, water is the major driving force for all living forms. Industrialization and human activities have severe negative impacts on water bodies, including pollution, habitat destruction, and disruption of the aquatic ecosystem, which have direct or indirect effect on human health. There are many sources of water pollution. The most polluting of them are industrial waste discharged into the river. Behavior is the response of living matter to some form of stimulus. Behavior is a significant connection between the organism and its environment. It is both a product and determinant of molecular, physiological, and ecological aspects of toxicology. Therefore, it offers insight into different levels of biological organization. Here are physiochemical properties of different meal effluent. Various scientists carried out physiochemical analysis of the effluent from different meals and found that the meal effluent contain high BOD, TDS, TS, and low DO, which are toxic to plants, fishes, and other aquatic organisms. Here are some pictures of different meal effluent. Effect of different meal effluent on fish behavior. The reaction of an animal to a toxic environment is significant as it reveals the internal changes occurring within it. Behavior abnormalities in various fish species exposed to pollutants have been reported by a number of workers. Here are some behavior changes which is observed by different scientists, such as disturbed social behavior, impaired reproductive behavior, changes in the locomotion, altered feeding behavior, avoidance and attraction response, mortality linked behavior. Here is a summary of a review of literature. Various scientists carried out his experiment. Devarajan et al. 2015 carried out his experiment on sugar mill effluent on tilapia, and he observed erratic movement, mucus coating over entire body surface, rapid apoculum movement. Other scientists Prakash S. And Verma A.K. 2020 conducted an experiment on channa punctators and observed erratic movement, excessive mucus secretion, rapid operculum movement. Kaur et al. 2013 conducted an experiment on Sirinus regala and observed erratic movement, increased mucus secretion, rapid operculum movement. Sarvade 2015 observed erratic swimming, leaping out of water, excessive mucus secretion, or rapid operculum movement in punctator stigma, and Pathan et al. 2009 observed erratic swimming, jumping out of water, thick mucus coating over the entire body surface, rapid operculum movement. In Rasbora, Deniponius, and Lee et al. And Garcia et al. 2011 and 21, they observed altered sexual competitive behavior in female Pallas promibus. And last is Yadav et al. 2007 observed hyperactivity, jumping out, and increased opercular movement in channa status. Here are conclusion. Different meal effluent significantly altered fish behavior, affecting their survival and ecosystem stability. By implementing proper treatment methods and enforcing environmental regulations, the adverse effect of the industrial pollutants can be minimized. Future research should focus on developing eco-friendly alternatives to
industrial discharge, ensuring the conservation of aquatic life and sustainable water resources. Here are references. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. If If you have any questions, you can ask her. For the next presentation, I invite Jyoti Devangar from from Government PYT Autonomous PG College Durg. The topic of her presentation is freshness evaluation of tilapia at ambient temperature in summer and winter season. Ma'am. पीपीटी दिए हैं क्या? पीपीटी दिए हैं क्या? नंबर देख देख के यार यहाँ से मैम ऐसा पकड़िए Good afternoon. Good afternoon, everyone. So my presentation. पॉइंटर को ऐसे My topic of presentation is freshness evaluation of tilapia at ambient temperature during summer and winter season. So these are the contents. So tilapia is one of the most important aquaculture species because of its omnivorous nature and ecological hardiness, because they can survive unfavorable conditions. And it is also very nutritionally and economically very important fish, and the temperature variation affect the quality of tilapia. So the quality of tilapia can be assessed by the different method, and one of the method is quality index method. Quality index method is a sensory method to assess the organoleptic analysis of tilapia. So the overall aim of this research is to assess the quality of tilapia at ambient temperature. So here are some review of literature in which we can see that the quality index method is used by many authors to assess the quality of the different fish species such as rohu, Cyprinus scorpio, red tilapia, Oreochromis sirenus, and many more. नागा एट ऑल ने स्टडी किया और उन्होंने देखा कि फिश को डिफरेंट टेम्परेचर पे स्टोर करके रखा 1 डिग्री 4, 9, 15 एंड 90 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करके रखा, और उन्होंने कंक्लूड किया कि QM स्कोर इंक्रीजेस फास्टर एट हायर स्टोरेज टेम्परेचर. सिमिलरली मोंटियो कैमोचा ने भी इंडिकेट किया कि अगर हम फिश को 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करके रखते हैं तो उनका स्टोरेज है हमको 16 डेज का फाउंड होता है, लेकिन अगर हम उसको 5 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करके रखते हैं तो हमको सेल्फ लाइफ उसकी हमको ओनली 8 डेज पे देखने के लिए मिलती है. वही हम देखते हैं एडोगाल ऑल ने भी रिसर्च किया और उन्होंने 30 to 31 डिग्री सेल्सियस पे तिलापिया को स्टोर करके रखा, और वहां पे उन्होंने पाया कि सेल्फ लाइफ जो है ओनली 12 आवर्स की थी. सो मटेरियल एंड मेथड इज, हमने सबसे पहले नाइल तिलापिया को बांदा तालाब दुर्ग से कलेक्ट किया, उसको हम ट्रांसपोर्ट करके लैब में लेके आए और वहां पे फिर हमने उनका क्वालिटी इंडेक्स मेथड के थ्रू उसका क्वालिटी इवैल्यूएशन किया. सैंपल लिया समर एंड विंटर सीजन में हमने, और उसका हर 30 मिनट्स में हमने उनका क्वालिटी असेसमेंट किया. देन सेंसरी इवोल्यूशन में हम ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को उनके देखा कि स्किन अपीयरेंस कैसा था, स्केल अपीयरेंस कैसा था, आई कॉर्निया, गिल कलर, गिल म्यूकस कैसा था, एंड लास्ट में टेक्सचर ऑफ बेली एंड बैक साइड हमने उनका देखा. तो ये जो क्वालिटी इंडेक्स मेथड स्कीम जो हमने यूज किया है वो कबूतर एट ऑल का यूज किया है, जिसमें सबसे फ्रेश जो कंडीशन है फिश की तब हमने उनको 0 मार्क्स दिया है. वही जैसे ही फ्रेशनेस डिग्रेड होने लगती है, स्पॉइलेज बढ़ने लगता है, तब हमने उसको 1, 2 एंड 3 मैक्सिमम मार्क्स हमने उनको प्रोवाइड किया है. तो ओवरऑल जो हाईएस्ट मार्क्स जो होता है वो 16 होता है. तो जब हम ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि 16 मार्क रीच कर गया है तो हम उस पॉइंट को एज अ रिजेक्शन पॉइंट कंसिडर करेंगे कि आफ्टर दैट द फिश इज नॉट फ्रेश फॉर कंजम्पशन. So these are the observation in which we can see that first में थर्ड फिगर में जो समर सीजन है वहां पे हमने देखा है कि फर्स्ट आवर का है, देन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आवर का. तो स्टार्टिंग में बहुत ही फ्रेश आई कॉर्निया जो है बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, जो गिल है उसका रेड कलर का है. वही हम लास्ट में देखते हैं आफ्टर 4 आवर तो आई कॉर्निया जो है वो ट्रांसलूसेंट हो गई है, व्हाइटिश एक कलर आ गया उसके ऊपर कॉर्निया के ऊपर, एंड गिल कलर जो है वो फेड हो चुकी है. सिमिलरली विंटर सीजन में भी स्टार्टिंग में दैट इज वेरी फ्रेश एंड प्लीज कंटिन्यू. ओके मैम. So these are the
रिजल्ट की हमने ग्राफ प्लॉट किए जिसमें हमने ये बताया कि टाइम के साथ साथ क्यूएम स्कोर जो है लिनियरली हमारी इंक्रीज होती जा रही है। डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के लिए हमने डिफरेंट ग्राफ्स हमने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं कि जो समर सीजन में है जो हाईएस्ट मार्क जो 16 है वो हमको 4 आवर में ही प्राप्त हो गया है। वही हम विंटर सीजन की बात करते हैं तो आफ्टर 7th आवर द हाईएस्ट स्कोर इज फाउंड। तो हम बोल सकते हैं कि समर सीजन में क्योंकि टेम्परेचर कम रहता है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो फिर फेस जल्दी डिग्रेड होती है। वही विंटर सीजन में एम्बिएंट टेम्परेचर जो रहता है कम होता है तो फिर फेस जो है थोड़ा स्लोली डिग्रेड होती है। वही इस ग्राफ के थ्रू भी हम देख सकते हैं। तो और जो क्वालिटी इंडेक्स मेथड है उसका हम यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज जो एट्रीब्यूट्स हमने यूज किया है जैसे कि आई कलर, तो कॉमन एक ले पर्सन भी मार्केट में खरीदने जाता है तो वो अगर आई कलर को देखे कि स्टार्टिंग में अगर फ्रेश है, ट्रांसपेरेंट है, दैट इज इट इज वेरी फ्रेश फिश, और वैसे ही वो ट्रांसपेरेंट होने लगती है टाइम के साथ और ज्यादा डिग्रेड होगी तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है, एक ओपेक कवरिंग उसके ऊपर डेवलप हो जाती है। तो हम पता लगा सकते हैं बाय जस्ट सीइंग विजिबल है कि ये फ्रेश है फिश कि नहीं है। तो दिस क्वालिटी इंडेक्स मेथड इज यूजफुल हियर। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. I guess we have no questions. Do we have Jashwant Nayak, sir? Jashwant Nayak. Okay. Okay. For the last presentation of the session, I invite Satish Gota, sir, from Government Vivaiti Autonomous PG College. The title of his presentation is Phycochemical Characteristics and Diversity of Aquatic Insects in Kalyan Sagar, Durg, Chhattisgarh, India. So. जिनका लेक्चर हो गया है वो सर्टिफिकेट जरूर ले लेंगे पीछे जाकर। आशीष, उनके सर्टिफिकेट हो गए? हाँ, दिलवा रहे हैं। और कल का हमारे कॉलेज के जितने लोग बच गए हैं, कल 10 बजे से हम लोग शुरू करेंगे, शार्प 10 बजे शुरू हो जाएगा। कल हम पूरे कॉलेज अपने कॉलेज करेंगे। My topic, physicochemical characteristics and diversity of aquatic insect in Kalyan Sagar, Chhattisgarh. My research scholar. Introduction. Aquatic insects जो है प्रोगेतेसी खाल से ही अब तक उनका इंसेक्ट का जो यूज जो है भोजन के रूप में किया जा रहा था। ये जो है लगभग 250 स्पीसीज से अधिक स्पीसीज को एज ए फूड के रूप में ह्यूमंस बींग्स इसको कंज्यूम करते हैं। इसका रीजन है कि उसमें कुछ मिनरल्स मिल जाते हैं, कुछ प्रोटीन्स, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इनके बेटर सोर्स होते हैं। साथ ही साथ एक्वेटिक बॉडी के जो स्टेबिलिटी के लिए या उनके कंपोनेंट रिसाइकलिंग के लिए भी बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। Our objectives analyze limnological parameters, bonds और दूसरे physicochemical characteristics bonds. Observation, identification, documentation. Our sites, Kalyan Sagar. These pictures, review literatures, material and methods, preservation, identifications, जो कलेक्ट किए उनका जो है प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन किए, ठीक है, सिग्नल वाइज विंटर सीजन्स एंड समर सीजन्स। फिजिकोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें जो है कलर्स, ऑर्डर, टेम्परेचर, टर्बिडिटी, पीएच, कंडक्टिविटी, एल्कलिनिटी, फ्री कार्बन डाइऑक्साइड, डिसॉल्व ऑक्सीजन, क्लोराइड, हार्डनेस, सल्फेट, टोटल फॉस्फेट, नाइट्रेट्स। रिजल्ट एंड डिस्कशन, स्टडी के दौरान हमने 25 स्पीसीज को आइडेंटिफाई की। ये 12 बिलोंग करते हैं 18 ऑर्डर से। एक्नॉलेजमेंट, रेफरेंस, कल्याण सागर, कुछ जो एक्वेटिक इंसेक्ट आइडेंटिफाई किए उनके फोटोग्राफ्स, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ एक्वेटिक इंसेक्ट्स। इसमें हमने जो है हिमेप्टेरा जो ऑर्डर है वो उस ऑर्डर से हमें मैक्सिमम एक्वेटिक इंसेक्ट्स मिले। फिजिकोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के जो है कंपैरेटिव स्टडी, परसेंटेज ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स एक्वेटिक इंसेक्ट्स, इसमें जो है हिमेप्टेरा के मैक्सिमम 41% इस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। थैंक यू।
Thank you so much, sir. So this is all for the presentations. Now I invite Dr. Trilokdev sir to address this session. Thank you so much, Vandana madam. First and foremost, I would like to express my gratitude to the organizing team of this 3 days international seminar for giving me the opportunity to join this prestigious event as a chairperson. In this seminar, researchers and faculty members from different institutions have presented outstanding paper presentation. A total of 12 paper presentations were delivered in this session, all of which were exceptional quality. Thank you so much. Thank you so much, sir. Now I invite Dr. Kiralata Damle ma'am, Dr. Trilokdev sir onto the stage sir for certificate distribution. Gurpreet Bhatia sir. पर भी स्टेज में आ जाइए सर. चिरंजीव पांडे सर, डॉक्टर केशव आडल सर, प्लीज कम. Dr. Kiran Jain ma'am, Jagriti ma'am, Dr. Anita Shankar ma'am. Ma'am, please come onto the stage. वो मेरी है. फोटो अच्छी आ रही है. फोटो अच्छी आ रही है. फोटो अच्छी आ रही. फोटो फोटो क्या चीज है? सर आप क्यों नहीं जा रहे हो? सर थक गए. क्यों सर? सर है पीछे. बैठ के देंगे सर आप पीछे बैठ. सबसे पहले खुशबू निराला. मैं गुरप्रीत भाटिया से रिक्वेस्ट करूंगी सर प्लीज आप स्टेज पे आ जाइए. अनीता शंकर मैम, 5 मिनट के लिए आ जाइए. नेक्स्ट इज राजू. राजू गवर्नमेंट VYP ऑटोनॉमस पीजी कॉलेज. Next is Andhya Singh, Government VYP PG Autonomous College, Andhya Singh. पूर्णिमा सरोज, भारतीय विश्वविद्यालय दुर्ग. सतीश कुमार गुप्ता, गवर्नमेंट नवीन कॉलेज वैशाली दुर्ग. योगेंद्र साहू, गवर्नमेंट VYP ऑटोनॉमस पीजी कॉलेज दुर्ग. डे 2 करके फोल्डर बना उसको डिलीट मत करिएगा क्योंकि सर लोग को देना. चंद्रकला, गवर्नमेंट VYP PG ऑटोनॉमस कॉलेज दुर्ग. नेक्स्ट इज चंद्रकला, उसके बाद ज्योति देवांगन, गवर्नमेंट VYP PG ऑटोनॉमस कॉलेज दुर्ग.
चालू एग्जैक्ट 10 बजे चालू हो जाएगा। हाँ मैं भी जल्दी कोशिश करूँगी, लेकिन ये यहीं रखाऊंगी ताकि कोई Maya Devi, Government Government VYT TG Autonomous College, Tud. Maya. माया के बिहाफ में माया आप भी यही चाहते हो। Now it's time for the certificate of our chairperson, Dr. Trilok Dev sir. मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर कोई मैम को स्पेशली फैमिली मैम सर कोई शंकर मैम को जैसे रेड क्रॉस टाइप का बनाया रेड से। Thank you so Thank you much. so much, All the all the professors, senior professors. Thank you so much. Thank you for your patience. सारे बच्चे जो इतने पेशेंस के साथ बैठे हुए हैं, अगले 10 मिनट बाद हम यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए आप एक छोटा सा 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। लैपटॉप लगेगा, मैं मीटिंग ऑफ कर रही हूँ। शट अप। कोई लगाएगा ना साउंड वाले भैया, वो बोला था इसमें करेंगे करके।